Assalamu alaikum and welcome to DHA Sports Club Moin Academy, where it's time for the big ones. It's the semi-final stage of UBL Karachi Table Premier League Season 3. We have two of the best teams in semi-final number 1 as the first match of the day. It's to be played between Malir Malangs and DHA Dabanggs. We're all set for the toss. Let's move on towards it. Both the captains are here with us. Leading Malir Malangs is the captain Dawood Pathan. Leading DHA Dabanggs is the captain Yasir Mushtaq, along with match referee Numanullah. It's Dawood Pathan who has the coin. Dawood, bismillah kare. Here it KTPL. goes. KTPL is the call. KTPL it is. Yasir Mushtaq, टॉस जीत के आपने क्या करने का फैसला किया? सर पहले बैटिंग करेंगे हम। पहले बैटिंग करेंगे। टीम में जो चेंजेस रिसेंटली आपकी हुई हैं उसकी वजह से बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ बन गई है। कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं फाइनल में टिकट कटाने के लिए? जी ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि जिस तरह से चेंजेस होने के बाद टीम हमारी अच्छी हो गई उसको रिटेन करें, हम लोग आगे फाइनल तक भी इसी तरह से कंसंट्रेट करें और अच्छी क्रिकेट खेल के टूर्नामेंट जीतें। कोई चेंजेस आपकी टीम में आज? नहीं, सेम टीम के लिए पिछले मैच की। यासिर मुश्ताक, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू। ऑलराइट, दाऊद पठान और उनकी टीम बहुत शानदार खेली है सीजन 3 में KTPL के। दाऊद पठान आई एम श्योर बहुत कॉन्फिडेंट होंगे आप, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी टीम में थोड़ी सी और स्ट्रेंथ आ गई है। लीग स्टेजेस में आपने उनको हराया ज़रूर है, लेकिन अब थोड़ी सी अलग शक्ल है उनकी टीम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल अच्छी टीम है उनकी और इंशाल्लाह हमारा भी यही प्लान था कि हम टॉस जीतकर आज फर्स्ट बॉलिंग करें और इंशाल्लाह इनको कम से कम में रोकें। ये एतमाद तो आपको होगा इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दिखाने के बाद कि अगर कोई टीम DH दबंग्स की स्ट्रेंथ को हरा सकती है तो वो मरील मलंग्स है। जी जी बिल्कुल, हमने इनको राउंड में भी हराया और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सेमीफाइनल में भी हराएं। Right, Dawood Pathan, best of luck for the match. Thank you. All right, ladies and gentlemen, the word from the center is in the first semi-final, DH Dabanggs have won the toss and decided to bat first. We'll take a break here and we'll come back with live action.
दिखा दे अपना हुनर कुछ बांध कमर कोई ना हो डर यह टैप बॉल का जोश और जुनून जो होगा वतन में अब घर घर हर कदम पुरजोर हो तेरे नाम का ही शोर हो जादू अपना जगा कर सबको अपना बना कर दिल जीत ले 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 चांद सीने पर सजा और सितारा दिल से लगा गेम तू अपना उठा जीत का नारा लगा हर कदम पुरजोर हो तेरे नाम का ही शोर हो जादू अपना जगा कर सबको अपना बना कर दिल जीत ले ललकार से रफ्तार से हर वार से यलगार से ललकार से रफ्तार से हर वार से यलगार से दिल जीत ले 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 रफ्तार से दिल जीत ले हर बार से दिल जीत ले Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and good evening to all of you viewers wherever you are across the globe. Here we go. The wait is over. The first semi-final, the big one we have got in our hands. DHA Dabanggs are taking on Malir Malangs all the way from DHA Sports Club Moin Academy. And the news from the center has been that DHA Dabanggs captain Yasir Mushtaq has won the toss and opted to bat first. Boost up your lifestyle with Boost Watch. There you see, as the umpires are making their way to the center, these are the two gentlemen who will officiate tonight's first semi-final. Naeem Ahmed to the left of your screen and Sibtan Raza to the right of your screen. And with me is Kainat Imtiaz to talk about it. Good evening and hello, Kainat. Good evening, Palak, and a really warm welcome to all the viewers watching across the globe. Malir Malangs are setting off to the ground to set the field. It is going to be a very interesting semi-final as two of the most strongest side are against each other. That is DHA Dabanggs and Malir Malangs. Out come the two openers, Waqas Sher and Khurram Chakwal, Khurram Shehzad. Such an explosive pair this at the top of the order. They will have to do some serious damage from the top. And there you go. DHA Dabanggs, Khurram Shehzad, Mohammad Waqas Sher, Salman Khan, Mustafa Hanif, Yasir Mushtaq, Muhammad Umar, Arslan Jamshed, Umar Shehzad, Zahir Ahmed, Abdul Qadir, and Muhammad Hasnain. Whereas Malir Malangs have DK the captain, Mukhtar, Mimran, MG Majid Goli, Fazal Afridi, Ali Chota, Aziz Ahmed Khandro, Obaidur Rahman, Kaleem, Misam, and Uwais Pathan. So it's going to be a thrilling contest. No question about that. Two of the best teams in this competition so far up against each other. Waqas Sher will be opening the batting from DHA Dabanggs. And his partner Khurram Shehzad doesn't need any introduction when it comes to tape ball cricket.
He's played first-class cricket as well. Such an experienced campaigner with all the talent he has with the bat. It's going to be MG Majid Goli to start the proceedings with the ball, one of the leading wicket takers in this competition. Right then, we are all set for the first semi-final of this UBL Amin presents KTPL Season 3, live from DHA Sports Club, Moin Academy, Karachi. You're watching us live on Geo Super and through various ways across the globe in 84 channels, different parts of the world. You're watching us. It's been obviously an exciting game of cricket, and this is what we are going to expect, and this is what we are going to witness, I'm sure. Big one. Here we go. Nicely bowled, and respect earlier on given by Waqas Sher. A good start by MG. Again, he has been a destructive bowler throughout the tournament. This is interesting to see how Waqas will face him, as they both are some quality players, and it's almost like playing a quality bowling towards quality batting. So yes, this is going to be really interesting for even the viewers to see, as the game itself is set and the players are all ready for the semi-final. Semi-finals, first hit in front of your eyes, and it's a high one. Oh my goodness gracious me, you gotta be kidding me. Too many butterflies under the ball, and none of them could catch the ball. What's going on? A genuine chance by the fielder to catch this one. It was not rightly timed, I guess. And Waqas was almost gone, settled for 2 runs, and Majid Goli must be really upset with this miss by the fielder. And again, it was a chaos in the field as 3 fielders were down. And it was not a full-bladed shot, and a great opportunity for Malir Malangs to start off with a bang. You cannot let these catches go down. And it was the captain, DK himself. How costly it can prove, time will tell. Obviously, Waqas Sher, one of those players you don't want to drop early in the piece. The dugout of DHA Dabanggs on your screen. Yasir Mushtaq, the captain, obviously. Zahir Ahmed, very experienced campaigner. Will have a job to do later on in the second innings with the ball. Down the leg side, erring in line. And this can happen when your catch is put down, your morale just gets dented, it decreases. Absolutely right. This is exactly what happens, and this was all over MG's face, that he is disappointed by that one important catch drop. And again, but I would say DHA Dabanggs, they are also under pressure, as it was just the second delivery that went for the catch. Down the leg side again. We'll have to come back with good line here. I think this is the situation where Majid Goli just doesn't need to think much of that catch. He has to focus on your job. He has to keep his focus back on his job and needs to deliver, because his team needs him badly, and he's been one of the leading wicket takers. He's been one of their main players. So it's his responsibility. Good to see captain having a word with him.
Well, of course, it's too early in the innings to take all that pressure on you. Just 2 deliveries bowled. He still have 4 to go and just 1 delivery, good delivery to get the player out. There you see, he's bowling a good line. And when he's bowling a good line, there is definitely respect shown by the batters, which is good to see. And obviously, Kainat, you're right. There will be nerves, there will be pressure because it's a big game, semi-final, and both of the teams are fully equipped. Have a look at those taped balls. And that serious face of the 4th umpire always. I've always seen him like this. Even when he is just roaming around, his face is almost like that most of the time. So it's strange. We'll have to ask him what's wrong. Maybe he just doesn't want to get his focus anywhere else rather than those balls. Very vigilant. Khurram is going to be on strike for the first time. He doesn't need second invitation, I tell you what. It's gone for 4, 1 bounce, but he's used that pace of Majid Gholi, and the line was very poor as well. But the good thing about that shot, he completely was in control of it. And a little bit of leg side delivery and just flicking it towards the square leg boundary. A great shot by Khurram. There you see, just at the last minute, didn't even shuffle a lot. Just using his arms to good effect to execute that stroke. Timing was exquisite. And this is the feature of his batting. There you see. This time he's got hold it. And he's got plenty of it because it's 6 over square leg. First one by Khurram Shehzad. Well, just look at the timing, the hand-eye coordination he has. It was a middle stump delivery and just using his wrist towards the square leg boundary. Oh, excellent shot. Again, it was completely the power of his wrist and the forearms. Yeah, you rightly pointed out. Didn't even transfer his body weight to the shot. Amazing stroke. Unbelievable how powerful he is with his wrists. Goes down the ground this time. Didn't connect as he would have liked. And they'll look for a quick single. Will complete in the end. So eventful first over comes to an end. 18 without loss of wicket. DHA Dabanggs winning the toss and opting to bat first. Right then, 18 runs of the first over. Khurram Shehzad, 11, got to double figures in no time. Couple of boundaries to him, a 6 and 4 on the onside. And Fazal Afridi, who is known as Mitchell Stark, will be sharing the attack with Majid Gholi. He also has been one of the impressive bowlers in the competition from Malir Malangs. Left arm quickie. So he's bowling with a mixed field, I would say, because we are only into the mandatory power play, the first power play in the first couple of overs. So you can have only 2 fielders outside the 30-yard circle. Goes through the offside. How good is that? What about the timing and placement? Khurram Chakwal, you little beauty. Well, a complete cricketing shot, I would say. Khurram seems more confident than Waqas in this innings. And this is what the partnership is all about. Khurram showing some character by these kind of shots. And again, putting it through the offside region of the ground. And again, a great shot by Khurram. He's just nailed it off the back foot through the covers.
And again, this time through mid-off and extra cover. Back-to-back boundaries by Khurram. He means business tonight. He plans to stay busy on every delivery, and again he's using all the opportunity given by the better outside off-stump deliveries, using it to all his advantage. And again, a great boundary by Khurram Shehzad. Yeah, overcompensated a bit. Fazal, the bowler, bowled a full toss, and Khurram was definitely equal to the task. He's going to be very key for the DHA Dabanggs perspective. He's their main player with plenty of experience under his belt. Oh my goodness gracious me! You gotta be kidding me! It's all about the timing. Nearly hit our cameraman down there. It's gone for the maximum. What a shot again! Khurram Chakwal showing some character again and again on every delivery. And yes, again using that hand-eye coordination. Just look at the flick he has. Outstanding shot by Khurram Chakwal. Oh my word. Such great wrist work here by Khurram. You won't see a better stroke than this. It's gone over wideish long on for yet another maximum. It was flat and it was long. My word, this guy is unstoppable tonight. Let me tell you something. This is not an easy shot to play. These are the most difficult ones to play because you're using only the wrist and the flick of your hand, and so difficult to play. I've been trying this shot, Falak, and it's I tell you this, these are not easy. Yeah, you're right, Kainat, but this guy has got plenty of experience. This time he doesn't get the connection of his liking. They will look for two here, but only one they will manage. What pure class we have witnessed already. Couple of boundaries through the offside and then flick of the wrist to get couple of maximums on the onside. Unbelievable. Already entertainment at sky level from Khurram. Well, indeed, Khurram has shown a great show to us, actually. And yes, the head position, we'll definitely talk more about those shots because the head position is really important. Well, this time it's Waqas Sher who is in the air, and one bounce into the boundary for 4 over extra cover. So eventful, expensive over by Fazal comes to an end, 25 of it. Almost a low full toss delivery. It was not rightly timed by Waqas still, but again went for a boundary, one bounce boundary. 2 done, it's 43 for none. There you see, Kainat, tomorrow a big one in our hands. Women, KTPL Power Goals taking on KTPL Queens. How excited you are about that clash? Super, super, super excited about this game. All hyping up the girls as well, as this is quite important for everybody, especially the girls, wherever they're playing, and table cricket, which is so close to everyone's heart. So well, yes. Nowadays girls are chipping in the combos as well. Well, indeed, everyone's really excited, and I'm just looking forward and super, super waiting for that game to start. That's all right. It'll be very good, interesting contest in our hands tomorrow, but let's get your focus back on this particular semi-final. Entertaining stuff by DHA Dabanggs already, especially Khurram. Majid will be continuing his bowling. Off the back foot, don't feed him there, he's good everywhere. Prince of Chakwal is unstoppable tonight. A pleasure to watch Khurram bat. I mean,
What exceptional shots. Whatever he gets outside or on the leg side, that is definitely going for a boundary. Completely outside off some delivery and putting it towards the point boundary. It's incredible. It's just the class of the man, Kainat. I tell you one thing. As a bowler, what would you do? You bowl him straight, he will pick you off straight down the ground, leg side. And if you bowl him outside the off stump, you give him a width, he's very square through the offside as well. Just incredible treat to watch on the ice. There you go. He's good there. He's good everywhere. One bounce into the boundary. Didn't get entirely out of the screws, but still manages to get a 4. He is putting up a show and everyone's enjoying it. Khurram Shahzad on the roll here. G is not happy with the bowling effort. I mean, I would say he shouldn't be happy with the bowling effort as well. Everything's getting easy for Khurram so far. And all of a sudden, umpires want to have a look at that. It clearly landed inside the boundary. It was a 4. All of a sudden, I'm telling you, Malir Malangs are in a conference meeting. Well, this is what pressure can do to you in these big games. Well, I see a lot of players being angry at the moment. And yes, this is what pressure does. You need to, refocus the board, because that can be difficult in the second inning to chase. On 40 already of 10 deliveries is KC Khurram Chakwal. And 50 for DHA Dabanggs. In no time, we are only into the 3rd over. Oh, he had to reach for that. It could have been a catch. My word. That was as simple as they come, and down she goes. It's a pressure. It's a pressure. Oh my God. Second catch dropped on MG's ball. Again, this was a wide delivery that he played and could have been out. So unfortunate. I feel for MG right now. You have to. Second catch going down off his bowling. I mean, he's a player you can't really put down. If you give a chance to a player of Khurram's caliber, he's not going to give you second opportunity, I'm telling you. He's one of those players, and have a look at that serious face. Feel for that young man. Down the ground goes Waqas for a single, and that will bring Khurram Shahzad once again on strike, who is absolutely in a devastating mood. Let's talk about the partnership at the moment, as we see Khurram at 41 and Waqas at 8. So this is important to build up that partnership, not necessarily always both the batters will be performing at the same level, but as we see Khurram on top and Waqas being just the guiding partner at the moment. Waqas is also doing good, sharing strike with his partner, because his partner is unstoppable tonight. This is Khurram Chakwal's night, I tell you what. On 47 with that 6. I would love to see the hat position. It was completely down, and it was the wrist that was doing the work only. It was the wrist and the forearms doing all the work and extending those arms towards the boundary, just giving it the direction. A great shot by Khurram again. I tell you what, Pakistan cricket team lacking in power hitting department. Why this guy didn't play for Pakistan? Goes on the onside this time. We'll give him a single. Right then, 3 overs done. Another expensive over by Majid Gholi. 60 without loss of wicket, DHA Dabanggs. And with that, we are going to have a change in the commentary. It's going to be Farooq Riaz and Zishan Khalid. Thank you very much, Falak and Kainat. Wonderful start from DHA Dabanggs in the semi-final. 60 for none after 3 overs. The perfect start, I should say, and the problem continues for Malir Malangs. They are unable to strike. They're unable to break this partnership.
Spectators are in good numbers towards the semi-final, the first of two semi-finals. The next semi-final to be played between Clifton Popular and Liari Legends. And the Combox have been joined by Zishan Khalid. Good evening. Thank you so much, Farooq. Yes, the league stages have done and the semi-finals have begun, and so far DHA Dabanggs are right on top of Malir Malangs. It was the first time in the tournament we saw Majid Goli has gone wicketless. And not only he has gone wicketless, but he has been really expensive as well. 35 with the 2 overs that he has bowled. We haven't seen Ali Chota as of yet. Usually he is the one who has shared the new ball alongside Majid Goli as the start of the innings. But look at the way Khurram Chakwal has batted so far. He has risen to the occasion. That's what big player does. They wait for the right opportunity. They wait for the bigger stage to showcase their skills. Fazal Afridi, meanwhile, is going to start his second over. Trying to play it finer. Nicely stopped by the fielder at short fine. They're just going to get a run. His wrist work has been immaculate from Khurram Chakwal. He has been quite spot on. He has heavily relied on timing and wrist work, and a number of great shots we have seen towards the onside. So once again he has displayed a great brilliance. And now Chota Vicky, who hasn't faced so many balls, now has finally got the strike. Certainly not under pressure, because Khurram Chakwal has absorbed all the pressure and really gave plenty of dose to the Malir Malangs bowler. Yeah, the aggressive start from Khurram Chakwal has allowed Waqas Chota Vicky to just get settled. Once again cramping him for room. He has managed to play it finer. There is a fielder at short fine who is once again going to do the job. 2 runs taken. There is a throw at the bowlers and he misses. And they are going to collect an extra run on the overthrow. Nothing is going in the favor of Malir Malangs. This is sloppy. Absolutely sloppy from Malir Malangs. They gifted one more run. They've already dropped a couple of catches, and it's a strong throw. And we would try to smash it towards the non-strikers, and quite unnecessary. And no backing up. 2 players were there, and nobody was there to collect the ball. So they were not really aware of the situation. So 1 catch drop in the outfield in the first ball when Chota Vicky survived, and the second catch was dropped at extra cover when Khurram Chakwal survived. Hammers it down the ground all across the turf. It's in the gap between long on and mid wicket. DK himself standing there at long on. It's just going to be a single. Talking about Malir Malangs, well, after the first 5 games, they were leading the points table. As we see, 50 comes up for Khurram Chakwal. 50 of just 15 deliveries, and he can raise the bat to the dugout. The crowd has been thoroughly entertained by the destructive performance by this opener. And you can see, you can hear the horns as well. The crowd has already turned out in numbers. It's just the first semi-final of this UBL Amin Karachi Table Premier League Season 3, and it promises to be an exciting encounter. Absolutely. Now it's time for Fazal to stop the flow of runs. It's short. It's up in the air. Once again, he's going to land in front of the fielder. And that has gone over the boundary ropes. That's going to be a boundary to Chota Vicky. Attempted bouncer from Fazal. And it's a good connection from Chota Vicky. Nobody was out there. It's more of a top edge. But it was a good enough connection. Turned out to be a safe shot. 1 bounce. And that ball went over the boundary. The overall, Fazal has been quite impressive. He has tried to not to offer any kind of length, especially to Khurram Shahzad. Yeah, just 9 runs considered in this over so far from Fazal Afridi. He was once again expensive in that opening over where he gave away 25. Needs to finish off the over well. Needs to break this opening stand now, Fazal Afridi. Full toss. It's up in the air, but might be given as a no ball as well. We'll have to wait for the umpire signal. Yes, it is. No ball signaled. 3 more added to the total, and they're going to get a free hit as well. Straight away, square leg umpire extended his right arm. Now the on-field umpire has confirmed it. So it was clearly above the waist height, and it will be a real bonus for DHA Dabanggs. The man on screen who has just caught his half century will face this free hit here. Low full toss, hit away on the leg side with some power. It just raced away to that fielder at square leg, although he's just going to get a single, but that was a beautifully timed stroke by Khurram Chakwal. That was exquisite, but he could not find the gap.
there was a protection out there, and he has really entertained through his wrist work. Some lofty shots and some shots along the ground, but he has to find gaps if he applies his wrist. Needs to finish off this over well now, Fazal. So far, so good. 13 runs has been conceded by the left-arm seamer. Waqas, who has been a silent partner in this opening stand, will be looking to get a boundary at least. Almost scoring at 21 runs and over. DHA Dabanggs. Looks like it's a good toss to win for the men in blue. The strike rate of 200 for Chota Vicky and more 300 plus a strike rate for Khurram Shahzad. This is immaculate start. It's going to be a wide down the leg side. He'll have to reload, Fazal Afridi. We were talking about Malir Malangs. They won 5 games consecutively. Then at the end of the league stages, they lost 2 games. And now at the way they are performing, it seems like they have completely forgotten how to dominate the opposition. And that's what happens. If you are dominating the opposition, you need to make sure that you win each and every game, because you lose one or you lose 2, all of a sudden the confidence shatters. It was quite a surprise. They were quite unstoppable in the beginning, as you said, and somehow they lost the focus. But still, they should look back their previous wins and just stick to the basics here, because they've got the talent, they have firepower in the batting, and they have some very good cricketers with the ball. Pitched up, hit away on the leg side. It's into the gap. They will get at least a couple. 2 runs taken of the last ball. 4 overs have now been done. DHA Dabanggs are racing along. They are at 77 for none. DHA Dabanggs are 77 without a wicket after the 4 overs. They still have 2 overs remaining to do some more damage in this innings. And Malir Malangs should be wary of the fact that in the next innings they are going to be up against someone like Zahir Ahmed Kalia and Abdul Qadir. Now these 2 gentlemen have just played 2 games for DHA Dabanggs against Johar Jawans and Gulshan Gaurs. That's a beautiful trophy the 4 sides, the semi-finalists, are going to be playing for. We have 4 contenders only for this trophy. With these 2 sides, Malir Malangs and DHA Dabanggs, and 2 other semi-finalists, Clifton Popular and Liari Legends, and the final to be played tomorrow between the winners of these 2 games. These are the highlights of his half-century. Khurram Chakwal started right from the word-go, especially against Majid Goli when he was using his wrists. He got boundaries, he got maximums. He was simply outstanding against both the new ball bowlers, especially that power of the wrist. He was given a chance as well, but his offside play was simply magnificent as well. Majority of the runs coming in maximums, and he got a few boundaries. Khurram Chakwal, he's a big name in tape ball cricket, and he has risen to the occasion. Not only the onside, but he also played some lovely shots to the offside as well. He lifted one over the backward point, then the cover drive, but mostly he dominated the onside. And great wrist work. Now Ubaydur Rahman is about to bowl. He is ready to face the music. He'll have big shoes to fill because Ali Chura is not bowling currently for Malir Malangs. DHA Dabanggs 77 runs have been scored already. Starts off with a short delivery. That has been nailed over square leg. That's going to go all the way for 6. That has been the story of the innings so far. Goodness me, how clean is this? It's a long hit from Khurram Shahzad. He's unstoppable here in the first semi-final. The first ball, half-track, a loosener. And thank you very much from Khurram Shahzad. Right of the screws. Beautifully played. And the length was there to be hit. There was not much pace behind that ball either. And Khurram Chakwal, when he's in such dangerous mood, he's not going to miss them out. Such an easy opportunity for Khurram Shahzad to pull it off. Wonderful show.
outside the Ostam. Well, he missed out. Could have gone a boundary as well because there was no failure at square on the offside. And even if we would have let that ball go to the wicket keeper, that might have been called a wide as well. The kind of form he's in, he just wants to apply the shots in every delivery. He doesn't want to waste any ball because he's equally a good offside player. There was an opportunity to lift the ball over the backward point fielder. Well, they need wickets, Malir Malangs, not just one, but at least 2 or 3 at this stage, and it can happen. We have seen 2 or 3 wickets falling in just 1 over so far in previous games. They need to break this momentum. They need to break this opening stand. Low full toss, carved away, pass backward of point. Once again, they're going to get a couple. The running between the wickets has been really good as well from both these openers, something we haven't seen previous matches as well, because batters usually rely on boundaries and maximum, but whenever the ball has cleared the infield and hasn't touched the boundary rope, they have straight away looked to get that couple. Yes, judgment has been excellent from both the batsmen. On that occasion, they realized the ball would not reach the fence, and immediately they decided to go back for 2. And I think the bowler got away with that. It was a low full toss outside the off stump, and Khurram Shahzad wasn't able to get fair amount of connection. So still 3 balls to go. He's already conceded 8. Well, we saw Hassan Painter getting highest individual score of this tournament last night, 83 against Karachi Knights. Khurram Chakwal has got the opportunity to beat that. Slower delivery. Wow, that is a very good hit. That is still in the air, and finally it has landed, but way beyond the boundary ropes. What a good shot that is. Brilliant shot outside the off stump. And really had to reach for that. Once again, it was close to be called wide, but Khurram Shahzad decided to go after it, and he lofted beautifully. Lovely to watch. Yeah, sometimes when you're trying to play that much away from your body, you end up slicing the ball towards long off, but he found the middle part of this bat. 65 of just 20. Ubaid Rahman also getting the treatment from these 2 openers. It's up in the air. There is a fielder at extra cover. Is he going to take it? And he has spilled it once again. It's the 3rd chance that has been put down. Well, it is not quite acceptable, especially in the semi-final. We talked a lot about the drop catches and fielding efforts. This is a 3rd chance, and it's a big one. Missed time shot, and the fielder had all the time in the world. Nobody was out there. No confusion, but he just missed it. A sitter has been dropped. And once again, Khurram Shahzad will make them pay. He is already unstoppable here. 67 of 21. It's pretty much like a one-man show, whereas Chota Vicky is just a spectator in most part of the innings. Maybe they have decided amongst each other, you go in the first innings, I'm going to go hard in the second innings. It's length. And when you bowl length to a guy of that caliber, that ball is going to disappear. Bad delivery. Juicy length offered to Khurram Shahzad and beautifully put away. He is in prime form and he had no trouble whatsoever to dispatch it. Magnificent way to finish the over. Easily done. Just a front foot forward and just nailed it over wide long on. Terrific batting. Over comes to a close and it has been a nightmarish start for the man in green, Malir Malangs. 99 for none. Would you believe it? If we talk about the leading wicket takers, Mohammad Umar, known as Umri Pacer, belongs to DHA Dabanggs. He's currently at the top with 20 wickets. Rana Mohsen of Liari Legends, who will be in action in second semi-final, also has got 20 wickets. Irshad Afridi at number 3 with 19. His side couldn't make it to the semi-finals. And Majid Goli has taken 17 wickets. So he has a chance in the second innings as well to climb up the ladder. Certainly you can't offer the length with such pace, with the medium pace, of course. If you are a super express, then you can offer some kind of length that can make the batsman make some kind of mistake. But that was an absolute gift. Well, DHA Dabanggs, the 2 games that they played previously against Gulshan Gohars and Johar Jawans, Zahir Kali and Abdul Qadir did not even allow them to score big in the first innings. There we see Ali Chota has now been given the ball to bowl the last over of the innings, and I'm really surprised by the fact that he will be bowling just 1 over. Could have been easily given the 3rd over so that he could have
bowled the second over as well. He has got pace. He has got bounce as well. He has been amongst the wickets. But I was really surprised by the fact that he wasn't given the over previously. Without a doubt. Just one over he will bowl in this over. It's the last one of the innings. It's short, it's wide. This time it's Chota Wiki who has deposited that ball over the side screen. That's a magnificent hit once again. Finally, he got the strike, and straight away he smashed it. He got the opportunity. The first ball of the last over outside the off stump, half cracker, and he really had to reach for that. Not off the middle, but he really spanked it. My word. That is some hit. It wasn't an easy shot to connect, but he has got half a dozen. Not a good time to bowl a delivery like that. Both the batters are very well settled out there. Now he bowls a full toss and he missed out. Chota Wiki, he must be disappointed. He would have looked to get as much strike as possible in this last over so that he could have scored more runs, but now he has given the strike back to Khurram Chakwal. Yes, he hit high on the bat. He mistimed it. It was just a touch higher than he expected, so it turned out to be one, but the good news is Khurram Shahzad has got the strike back. Plenty of damage has already been done. 100 they've already raised, and 120, 125 still looking very good here. Spare a thought for Malir Malangs openers who are going to be facing Zahir Kali in the next innings. DK and Mimran. Full in length. Has managed to hit it finer of the fielder at short fine. Will definitely come back for a couple, Khurram. Once again, he tried to flick it towards the backward square leg. Not the best of timing, just managed to get two. So it was, as you mentioned, a surprise to see Ali has been used just for one over. And it's a kind of bowler who has the capability to keep the batsman quiet. But surprisingly, we didn't see him in action before. Big cheer for both the sides. And the spectators will come up in greater number as the match progresses. Once again, it's length outside the off stump. He has carved it away over back for a point. Khurram Chakwal. He's going to get a couple once again because of the misfield from the fielder at deep extra cover. Once again, not a clean connection. He was trying to smash it through covers. Width was offered from Ali. Once again, very close to be called a wide, but he went after it. So a decent comeback after conceding a maximum. Well, you could see the shoulders already dropping down from the fielders of Malir Malangs. Now they are having a conversation, the captain with the bowler. It's just a first innings. They will still have a chance of making a comeback. And they haven't batted as of yet. Mimran and DK have been in really good form. And with the experience that they have got, even they can come closer to this total. Certainly, they have the ability to score somewhere around 110, 115. Let's see where will they finish. 2 balls to go. Fuller in length. Once again, Khurram Chakwal has just smashed that ball over long off. Wow, that is some hit. Juicy ball, over pitch outside the off stump. He has absolutely launched it, and launched it in a magnificent fashion. Goodness me. One of the best innings of the competition by a long, long way. Under pressure, but he absorbed the pressure and really applied his batting skills, and Malir Malangs, they are in deep, deep trouble. Squatted away on the leg side. There is a fielder out there in the deep. They will definitely look to come back for a couple of the last ball. And the wicket keeper couldn't gather the ball. Forget about drop catches. Even the ground fielding has been below par from Malir Malangs tonight. Yes, it was a certain chance to remove the bails, and Khurram Shahzad was certainly not in the frame. It's a fumble by the keeper. Plenty of damage has been done, and Malir Malangs did not pick up any wicket. 118 for none. It's a marathon performance. It's a huge performance from DHA Dabanggs in the semi-final. Khurram Shahzad was absolutely clinical. 85 of just 26. Waqas was good enough. 25 of 11. Absolutely top-class batting show. And it's a nightmarish start for Malir Malangs. Big cheer for both the openers. Yeah, Khurram Chakwal and Chota Wiki were being congratulated by Majid Goli as well, and spare a thought from Majid Goli. Like 2 catches were put down off his bowling. Both the openers could have been dismissed. Would have been a completely different story if those catches would have been taken.
but they were not, and as a result, DHA Dabanggs have scored a mammoth 118 runs on the board in just 6 overs, and they are being congratulated in the dugout as well. They think that half the job has been done already. That's how they started the proceedings. Majid Goli was targeted in his 2 overs, although he created few chances as well, but they were not taken. Khurram Chakwal continued in his merry ways. In his last few games, he has used his wrists to good effect. And to get that much elevation and the distance whenever you are looking to play with those wrists, that is simply outstanding. And he was very severe on the offside as well. Now, he's not many batters in tape ball cricket can play on either side of the wicket. That's the catch which was put down of Khurram Chakwal at extra cover. And after that, he showed no mercy to any bowler whatsoever. Frightening stuff from both the batsmen. Khurram Chakwal pulled it beautifully. He was in complete control. And the bit was off, but pitched up and beautifully launched it. And once again, he went over the offside. Catch was dropped. A sitter should have been taken. And then smashed it. The length ball over wide off long on. And then Chota Vicky banked it. He didn't get much opportunity, but he was good enough. So frightening stuff from Chota Vicky and Khurram Shahzad. 118 for none. That's something beyond special. Yeah, Khurram scoring 85 and Chota Vicky scoring 26. They couldn't pick up any wickets so far, all the 4 bowlers. Majid Goli was very expensive, 35 in his 2. Fazal Abbasi also conceding 42. Ubaid and Ali Chota bowling 1 solitary over and conceding 22 and 19 runs respectively. So the batters have done their job. Now it's time for the bowlers of DHA Dabanggs to make their presence felt in this first semi-final of UBL Amin Karachi Table Premier League Season 3. And to take you through to the next 3 overs, it's going to be Danish Anis alongside Naseem Rajput. Zishan and Farooq. और ये मेन बिल्डिंग DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी के जहाँ पर अगर फर्स्ट फ्लोर आप देखेंगे तो ये VIP बॉक्स है, उससे ऊपर आप देखेंगे तो हमारी पूरी प्रोडक्शन सेटअप इस सेकंड फ्लोर के ऊपर लगा हुआ है। और बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में जाके देखेंगे तो फिर यहाँ पे दानिश भी बैठे हुए हैं। नसीम राजपूत, यहाँ पर सवाल सिर्फ एक ही है, क्या यहाँ पर मिमरान और दाऊद पठान उस किस्म की तबाहकुन बल्लेबाजी कर सकते हैं जिस किस्म की तबाहकुन बल्लेबाजी खुर्रम चकवाल और छोटा वकी ने की? अगर नहीं तो उनकी टीम बहुत मुश्किलात में रहेगी। रन्स बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ज़्यादा ज़रूर करार दिए जा सकते हैं। स्टेट बॉल क्रिकेट में कल लियारी लेजेंड्स ने 140 प्लस भी किया था, 170 प्लस का टारगेट भी दिया था। तो उस लिहाज से जितनी तगड़ी बैटिंग है DHA दबंग की, अगर माजिद गोली एंड कंपनी रोकने में कामयाब हुए यहाँ पर डिफेंडिंग चैम्पियन को 118 रन तक, या मिमरान पे और दाऊद खान पे बहुत डिपेंड करेगा, जिन्होंने अब तक अपनी टीम के लिए ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो यासिर मुश्ताक टीम कैप्टन दिखाई दे रही है, ज़हीर कालिया आ गए, देन कादिर कश्मीरी हैं, सरदार हैं, इस बॉलिंग को खेलना भी आसान नहीं है। जितनी भी अहलियत दिखाई है हमें मलीर मलंग के बल्लेबाजों ने, आज उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मलीर मलंग ने DHA दबंग्स को, जो डिफेंडिंग चैंपियन है, जैसे नसीम राजू ने जिक्र किया, लीग स्टेजेस में हराया है नसीम, लेकिन ये वो टीम नहीं है, ये वो बॉलिंग लाइनअप नहीं है। इसीलिए टीम ऑनर मलीर मलंग, जफर अब्बास थोड़े से खामोश बैठे हुए हैं, और लेकिन बड़ी खिदमात हैं जफर अब्बास की, JDC की, और क्या ज़बरदस्त अंदाज से वो मलीर मलंग की टीम को लेके चले हैं। एक एक मैच में जो क्राउड रहा उनकी जानिब से, जो जज्बा दिखाई दिया, जो जोश दिखाई दिया, हमारे तमाम ऑनर्स, मैंने जो बार बार बात कही, DK दाऊद खान पठान टीम कैप्टन भी हैं जो बैटिंग के लिए आए, मिमरान के साथ ये नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हैं मिमरान, सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा दानिश। और जफर अब्बास भाई वेरी वेल डन, बहुत ही शानदार काम रहा है इनका इस UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के लिए। वैसे भी बड़े क्लोज हैं ये बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के भी, ज़हीर नसीर साहब के भी बहुत ज़्यादा खासी दोस्ती है। और जितने भी लोग मलीर मलंग्स की मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, मोहम्मद समी भी उनमें शामिल हैं, बड़े ज़बरदस्त डिसिप्लिन इंस्टिल किया है अपनी टीम में, अच्छी परफॉर्मेंस रही है और अच्छा फोकस नज़र आए हैं इनके तमाम प्लेयर्स। आज उनको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी
DHA दबंग्स ने शानदार खेल पेश किया है, खास तौर पे पिछले 3 मैचेस में। और ये जो इस वक्त थोड़े से रनअप पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने कादिर कश्मीरी, अगर किसी ने पहले इनकी बॉलिंग नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा अभी इस मैच में, अगर जो हमें सुन रहे हैं। क्या ज़बरदस्त इन स्विंग इनका आता है पेस के साथ दानिश, और बड़ी ज़बरदस्त हाइट भी है इनकी, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ब्रॉड शोल्डर्स, ही स्ट्रॉन्ग, और यही चीज़ उनकी पेस में भी नज़र आती है। और साथ साथ जैसे आपने जिक्र किया, टेप बॉल में आप ऑफ द पिच ज़्यादा मूवमेंट देखते नहीं है नसीम राजपूत, लेकिन कादिर कश्मीरी इसमें महारत रखते हैं और टेप बॉल में बॉल को बड़ा अच्छा अंदर बाहर दोनों तरफ काटते हैं। इनकी पेस के साथ उस मूवमेंट को संभालना मामूली बात नहीं। अब्दुल कादिर कश्मीरी, कश्मीर से ताल्लुक है, कादिर कश्मीरी के नाम से अब्दुल कादिर अब्बासी की एक शनाख्त है पाकिस्तान की टेप बॉल क्रिकेट में। और शायद बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा, बट इस टूर्नामेंट के साथ साथ यूएई में भी एक टूर्नामेंट हो रहा था नसीम राजपूत, और वहाँ पर बेस्ट बॉलर करार पाए थे कादिर कश्मीरी। तो पाकिस्तान के जो टॉप ब्रांड्स हैं उनको आप कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में देखेंगे। मोहम्मद समी, फुल टॉस गेंद, लेकिन फील्डर लिया हुआ था मिड विकेट पे, 1 रन का इजाफा हुआ। अब चाहे कादिर कश्मीरी हो या फिर जहीर कालिया हो या फिर सरदार हसनैन हो, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा फुल टॉसेस कराते हुए हमें नजर आते हैं, लेकिन इनकी पेस इतनी ज़्यादा है कि फुल टॉस में भी हवा थोड़ा सा स्विंग में होते हुए आता है हवा में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है बल्लेबाज के लिए। बिल्कुल, और पेस के साथ देखें दानिश, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेस के साथ स्लोअर वन के साथ हमने बहुत सारे बॉलर्स देखे जो दोनों जानिब गेंद को टर्न करते हुए दिखाई दिए। कादिर कश्मीरी शायद इस इवेंट के वाहिद बॉलर हैं जो पेस के साथ, जहीर कालिया में भी ये एबिलिटी मौजूद है। बेशक जहीर कालिया तो उस्ताद हैं। और इस बार कादिर कश्मीरी का गेंद ब्लॉक होल्ड में मिला। मिमरान, जिनकी शानदार फॉर्म जारी है, सेकंड बेस्ट बैटर है इस यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के। शानदार छक्का। मिमरान खान खटक, ये वो नाम है जिसने इसी किस्म के धुआंधार छक्के लगाए हैं इस टूर्नामेंट में शरीक हर बॉलर को। कादिर कश्मीरी को काफी खेलते आए हैं, ये बहुत सी बार एक ही टीम में भी नजर आएंगे आपको, लेकिन आज एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है। गेम ऑन। इस बार अच्छी गेंद यहाँ पर, डॉट बॉल अब्दुल कादिर कश्मीरी का। दिन का सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल विटनेस कर रहे हैं आप कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के सीजन 3 का। एक्शन पैक दिन लाइंड अप है आज आप सबके लिए, जो पाकिस्तान में ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं और जो दुनिया भर में ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं और फिलहाल हमें समझ रहे हैं। पाकिस्तानी दुनिया भर में मौजूद है नसीम। बिल्कुल, और बहुत देखते हैं टेप बॉल क्रिकेट खास तौर पे। अच्छी गेंद, इन स्विंग, और देखना होगा रन आउट हो सकते हैं, बहुत ही क्लोज कॉल होगी यहाँ। मिमरान शायद क्रीज में पहुंच गए, कह रहे हैं विकेट कीपर को, सब आपस में दोस्त है कि आउट नहीं हूं मैं, लेकिन अंपायर तो थर्ड अंपायर की जानिब जाएंगे। टच एंड गो होगा ये, लेकिन ये वो स्विंग थी जिसका आप जिक्र कर रहे थे। शेयर पेस की वजह से कादिर कश्मीरी को ये स्विंग मिलता है, बट मिमरान ने क्विक रिफ्लेक्सेस का मुजाहरा किया यहाँ पर और बड़ी फुर्ती के साथ बल्ला घसीटते हुए क्रीज के अंदर लेके आए। अभी भी टच एंड गो होगा, आसान फैसला नहीं होगा ये थर्ड अंपायर के लिए। अंदर आ गए जिस वक्त गेंद लगी है तो उनका बैट क्रीज में सेकंड जैसी बेल्स उड़ी है तो वो बैट ऐसा लग रहा है कि अंदर आ गया है। और ऐसी सूरत हाल में अमूमन थर्ड अंपायर का जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो बैटर की तरफ ही जाता है। इस बॉलिंग के खिलाफ मलीर मलंग्स के मिमरान और दाऊद पठान किस तरीके का आगाज देते हैं, ये इस मैच की टोन सेट करेगा। तूफान है उनके सामने, किस तरह इस तूफान से टकराएंगे और किस अंदाज में टकराएंगे। वेरी वेल बोल्ड,
एक आध गेंद ही होती है मेरी जो जरा थोड़ी सी आपको मिल जाए, वरना इतना आसान बॉलर नहीं हूं मैं। ये कहते हैं कादिर कश्मीरी और ये साबित भी करते हैं। क्या जबरदस्त इन स्विंग। और ये कोई ऐसी लेंथ नहीं है जिसको मिमरान की संभाल नहीं सकते। बहुत सी बार यॉर्कर लेंथ डिलीवरीज को भी छक्का मारा है इन्होंने, लेकिन कादिर कश्मीरी की पेस के साथ इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी लाइन मिस की तो मिमरान तैयार हैं। बॉल तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन मिमरान का उतना ही शानदार स्ट्रोक गेंद को पहुंचाया 6 रन के लिए सामने की जानिब। यॉर्कर लेंथ पे दानिश, जबरदस्त छक्का। ये ले जी, करो तेज गेंद, मेरा बल्ला उससे भी तेज चलता है। क्या जवाब दिया है यहां इमरान खान खटक ने। बेहतरीन स्ट्रोक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट है ये, गैर मामूली। इस शॉट ने मिमरान को, दाऊद पठान को और मलीर मलंग को एक एतमाद जरूर दिया होगा, क्योंकि अगर आप कादिर कश्मीरी के ओवर में 2 छक्के लगा रहे हैं तो बाकी बॉलर्स पे ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं प्रेशर डेवलप होगा। लेकिन सामने जहीर कालिया भी हैं उस्ताद। लेकिन इस किस्म के स्ट्रोक्स एक प्लेटफॉर्म जरूर सेट कर देते हैं। एटलीस्ट दिमाग में अगर आपके कोई भी शक व शुबात होते हैं नतीजे को लेकर, तो वो जरूर खत्म होना शुरू हो जाते हैं। दाऊद का भी दिल बड़ा हुआ होगा इन स्ट्रोक्स को देखकर। ये आ गए जी जहीर अहमद। पाकिस्तान इनको, बल्कि पाकिस्तान क्या दुनिया इनको जहीर कालिया के नाम से जानती है। या तो अमिताभ बच्चन पॉपुलर हुए थे इस नाम से, एक वक्त उनकी फिल्म आई थी कालिया, या फिर हमने देखा जहीर कालिया पाकिस्तान में बहुत ही पहचान रखते हैं। पाकिस्तान नहीं बल्कि जहां जहां टेप बॉल क्रिकेट खेली जाती है दुनिया भर में, वहां जहीर कालिया का नाम है। ऑन साइड की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया। यहाँ काफी रेयरली देखते हैं हम टेप बॉल क्रिकेट में सिंगल्स और डबल्स का इतना किरदार होता नहीं है। ज्यादातर छक्के चौके लगते नजर आते हैं। कैचेस भी बड़े ड्रॉप होते देखे हमने, और ये भी टेप बॉल क्रिकेट का खासा ही है नसीम। बहुत फास्ट क्रिकेट है, इसमें कैचेस ड्रॉप भी होते हैं, पकड़े भी जाते हैं, रन्स भी बनते हैं, कभी कभी बॉलर्स डोमिनेट बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। तो ये तमाम एक्साइटमेंट इस यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल क्रिकेट लीग के ज़रिए, प्रीमियर लीग के ज़रिए जो है वो अब सब लोग देख रहे हैं। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस जहीर कालिया का बहुत ही ज़बरदस्त। इस दफ़ा थोड़ा पैर उनका जब थ्रो कर रहे थे तो फिर, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। ये पैर डीएचए दबंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल तक, अगर ये फाइनल में जाते हैं। जहीर कालिया की पहचान उनकी पेस जरूर है, लेकिन ये वाहिद वेपन नहीं है उनके आर्सेनल में। शानदार अंदाज में अपनी पेस को वेरी भी करते हैं। साथ साथ आप देखें अगर बहुत क्लोजली जब बॉल को डिलीवर कर रहे होते हैं तो अपनी रिस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, और दोनों तरफ अपनी रिस्ट को मूव करते हुए नजर आएंगे। यानी कि दोनों तरफ बॉल को काटने की भी कोशिश करते हैं जहीर कालिया, और यही वजह है कि और ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। रिप्ले में आपको नजर आएगा आखिरी वक्त में बिल्कुल अपनी रिस्ट का इस्तेमाल करके बॉल को अंदर की तरफ काटा। ये भी कमाल है जहीर कालिया का। और लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट, स्लोअर वन जगह पर ही करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम होती है। बहुत खूबसूरत बॉलिंग जहीर की। दाऊद पठान, टीम कैप्टन मलीर मलंग्स। ये वाइट बॉल का सिग्नल, 2 रन हासिल होंगे। दानिश, इस सेमीफाइनल के बाद दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा जहां लियारी लीजेंड्स की टीम क्लिफ्टन पॉपुलर के मध्य मुकाबल होगी, और क्लिफ्टन पॉपुलर हमारे पॉपुलर ग्रुप हमारे ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर भी हैं, और बड़ी ज़बरदस्त उनकी टीम ने मुकाबला किया अब तक इस इवेंट में। इमरान अली रोशन जो उनके ऑनर हैं, और
लियारी हारिस अली मिठानी साहब की टीम है और ज़बरदस्त काम किया है उन्होंने। तबीयत ख़राब रही ज़रा हारिस अली मिठानी भाई की, वो ज़्यादा आ नहीं सके। शिराज ने बहुत अच्छा इस टीम को देखा। शिराज उमर जो को ऑनर इस बार ऑन साइड की जानिब खेला है, 2 रन हासिल करेंगे। ज़हीर कालिया की इतनी तारीफ हुई इधर कॉम बॉक्स में, किसी और की इतनी हो तो उसको नज़र लग जाए, लेकिन उस्ताद ज़हीर कालिया हैं, इतनी मेहनत की है इन्होंने कि अब बड़ी डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करते हैं। ज़्यादा एरर्स नज़र नहीं आते आपको इनकी लाइन और लेंथ में। बहुत ही क्लोज है ये, क्योंकि बैट उन्होंने नहीं रखा था और पैर उनका ऐसा लग रहा है कि हवा में है। बैट भी नीचे आ चुका है नसीम राजपूत, बैट की गुलाई है थोड़ी सी नीचे, सो एक तरफ से आपको बैट उठा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ इस एंगल से आपको नजर आएगा। इमरान सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये एंगल भी उन्होंने दिखाया। यहाँ देखें, यहाँ बैट ग्राउंड हो चुका है। बिल्कुल दानिश, हम पैर देख रहे हैं लेकिन इस एंगल से अगर हम देखें तो बैट ग्राउंड कर चुके हैं यहाँ दाऊद पठान। वेरी गुड जजमेंट दानिश। जजमेंट से ज्यादा आंखों का कमाल है ये। और ये आ गई थर्ड अंपायर की कॉल भी, ग्रीन बत्ती जली, यानी कि दाऊद पठान आप खेलते रहें, आपकी टीम को आपकी जरूरत है। मुझे खुशी इस बात की है कि आपकी आंखें बिल्कुल उस जगह पे थी जहां पर होनी चाहिए थी और आपने बिल्कुल सही देखा दानिश। ज़हीर कालिया ने इस वक्त अपनी नजर जमाई हुई है दाऊद पठान की विकेट पर। बड़ी विकेट है ये DHA दबंग्स के लिए। दाऊद पठान का बल्ला रन निकलना शुरू हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग। एक दूसरी मरतबा गेंद इस जानिब गई है, क्योंकि शॉट जहां बैटर खेलने गए थे वहां नहीं गया, बल्कि इनसाइड एज लगने के बाद गेंद स्क्वायर लेग की जानिब गई। बाकायदा खेल रहे हैं यहाँ पर ज़हीर कालिया अपनी पेस के साथ, अपनी लेंथ के साथ, बॉल को वह मूव भी कर रहे हैं ऑफ द पिच। खूबी अपनी रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं बॉल को मूव करने में। क्या बात है, हम 12 कहते हैं बॉलर्स का गेम नहीं है टेप बॉल, पर जहां ज़हीर कालिया हो वहां आप उसको बॉलर्स का गेम भी कह सकते हैं। यही बात है उस्ताद ज़हीर कालिया की। बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 गेंदें हैं। इमरान डी के सामना कर रहे हैं कैप्टन मलीर मलंग्स। इस बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग। ये जो कैचेस छूटने का एस्पेक्ट है नसीम, इस पर भी बात करनी चाहिए मेरे ख्याल से हमें, बिकॉज हमने भी टेप बॉल क्रिकेट हर पाकिस्तानी की तरह बड़ी खेली। टेप बॉल क्रिकेट में इतना आसान होता नहीं है बॉल को कैच करना, खासतौर पर जब बॉल तारा बन जाए, हवा भी चल रही हो, बॉल घूम घूम के आ रहा होता है नीचे। इतना आसान होता नहीं है जितना लोग समझते हैं। रबर की गेंद होने की वजह से थोड़ा सा हाथ से स्लिप भी करती है ये गेंद। हार्ड बॉल ज़रा थोड़ा सा ग्रिप कर जाती है हाथ में आने के बाद। इसकी अपनी एक प्रैक्टिस है। और फिर जब बात हो टेप बॉल की, तो जिसके हाथ में बल्ला आता है वो बैटर बन जाता है, जिसके हाथ में बॉल आती है वो बॉलर बन जाता है। फील्डिंग की ड्रिल्स कम ही होती हैं। पूरा टाइम लेते हैं अपना ज़हीर कालिया। इस बार गेंद मिल गई रडार में जहां चाह रहे थे इमरान। मच नीडेड बाउंड्री फॉर मलीर मलंग्स। टेप बॉल में इसको कहते हैं, बिल्कुल मुंह में दे दिया और बिल्कुल स्लॉट में था ये डीके के लिए। उनको भी मौका मिला अपने हाथ खोलने का। इनफैक्ट इमरान खान खटक थे जिन्होंने शॉट लगाया। अब तक का बड़े पॉजिटिव नजर आए हैं 2 ओवर के बाद 28 बगैर किसी नुकसान के। UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 इस वक्त 84 से जायद ममालिक में नशर किया जा रहा है, जिसमें आप अफ्रीका, XP, MBC, विलो TV, सब सहारा, सहारा, जियो
ये सारे ममालिक आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान से लेकर कई ममालिक के अंदर ये नशरियात जारी है और विलो टीवी की वजह से अमेरिका, कनाडा, वेस्ट इंडीज़, इन तमाम जो आइलैंड्स और ये हमारे सारे स्पॉन्सर साइमा ग्रुप, इनकी टीम ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। सिंध पुलिस, SSU, डायनामिक इंजीनियरिंग सिंध और ये बूस्ट भी अप योर लाइफस्टाइल, साथ साथ सारा बेग डिजाइनर्स भी इसमें शामिल हैं। यूबीएल अमीन टाइटल स्पॉन्सर्स हैं कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन के। तो ये जितने भी स्टेक होल्डर्स थे वो ना सिर्फ अपना रोल प्ले करके अपने घरों में बैठे रहे, बल्कि यहाँ मौजूद रहे। ये इतनी इम्प्रेसिव और इतनी मजे की बात थी। विल टॉक अबाउट इट। क्लोज, बहुत ही क्लोज था वैसे ही है। तो बेसिकली नसीम, इन्वॉल्वमेंट होनी बड़ी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ रहे हैं उस प्रोजेक्ट को किस तरह ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, और शानदार अंदाज में ऑर्गेनाइज कराया गया कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन को। यासिर मुश्ताक चाहते तो डाइव भी कर सकते थे, बट इंतजार किया बॉल का। कादिर कश्मीरी ऑन फायर, वेरी वेल पुल्ड, और ये अपील भी की है उन्होंने यहाँ पर कि क्या गेंद मुस्कुरा भी रहे हैं कादिर, और ये कि रिव्यू की बात कर रहे हैं कि इसका रिव्यू लिया जाए, और बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग। किसने सोचा था आज से 20 साल पहले कि टेप बॉल क्रिकेट में भी एक ऐसा फैसला आएगा कि उसका रिव्यू लिया जाएगा। टेप बॉल क्रिकेट अब ऐसे ही इसी लेवल पे हो रही है। ये देखें स्लो मोशन में। कादिर कश्मीरी कहते हैं कि बॉल बम्प हुआ है जूते से और ग्राउंड से टच हुए बगैर उनके हाथ में आया है। प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई उन्होंने। ओह, अल्ट्रा स्लोमो चाहिए होगा इसके लिए नसीम। लेकिन वेरी गुड प्रोडक्शन, बहुत ही क्लोज एंगल ज़रूर दे दिया है यहाँ पर थर्ड अंपायर को। ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्शन है, और ये जो कादिर कश्मीरी का मुतालबा रहा था, आई थिंक अंपायर के लिए आसान होगा ये देना। गैर मामूली पेस पे एक तो बॉलिंग हो रही है, ऊपर से फिर एज लगकर बॉल और भी तेजी के साथ निकलता है, तो बड़ा मुश्किल होगा थर्ड अंपायर के लिए भी यहाँ अंदाजा लगाना कि बॉल क्या जूते से लगकर ऊपर आया है या फिर जमीन से भी टच हुआ है। बिल्कुल नसीम राजपूत, अब की बार आपकी आंखों ने भी मेला लूट लिया। मेरी भी तवज्जो इधर ही थी। ये बहुत ही दिखाई दिया यहाँ पर कि ऐसा ज़मीन से लगकर गेंद जूते को जाके लगी है, और ये अंपायर का डिसीजन भी सामने आ गया। लेकिन बॉलिंग क्या कमाल है दानिश, अगर हम देखें तो ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग है जिसने अब तक मुश्किलात पैदा की हुई हैं। मिसबा टीम कोच इस वक्त टेंस में है, ज़ाहिर पूरा डगआउट इनका इस वक्त टेंस में होगा। एक तो परफॉर्मेंस हो रही है विद बॉल, साथ साथ माइंड गेम्स भी चल रहे हैं यहाँ पर। ये भी माइंड गेम्स ही थे कि कादिर कश्मीरी ने थर्ड अंपायर की तरफ फैसले को भेजा। शायद उन्होंने पढ़ लिया होगा कि ग्राउंड से लगी है बॉल, लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर धकेला है यहाँ पर डीके को। और बोल्ड कर दिया, जबरदस्त इन स्विंग डिलीवरी। अगर ठीक है पहली गेंद पे आप बच गए, लेकिन दूसरी गेंद पे नहीं बचेंगे। दाऊद खान पठान, कमाल बॉलिंग है ये। बॉल देखिए पहले हवा में मूव हुआ है, फिर पड़ के मजीद अंदर की तरफ आया है। अगर इस स्पेस पर और इस लाइन पर आप क्रॉस जाएंगे तो बड़ा ही मुश्किल है आपके लिए बच पाना। डीके गॉन फॉर 7, 28 पे 1। बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई जब से 2-3 प्लेयर्स DHA दबंग के वापस आए, और ये उनकी लिस्ट में शामिल थे। ये देखें ये टीम चूँकि पहले साल से खेल रही है, दानिश खान टीम ऑनर पहले साल से साथ हैं, उन्हें पता है कि खिलाड़ी कौन से उठाने हैं, ये वापस आएंगे। और ये लर्निंग प्रोसेस अब हमारी सारी फ्रेंचाइजर्स का होगा। क्लिफ्टन पॉपुलर डेब्यूटेंट है, कराची नाइट्स डेब्यूटेंट है, और ये पॉपुलर ग्रुप की टीम है कि जो हमारे ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर भी हैं। कलीम बैटिंग के लिए आए, बड़े एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं कलीम, और अपनी टीम के लिए कोई अच्छी इनिंग्स खेली है। इनकी टीम अगर सेमीफाइनल तक पहुंची है तो इनका भी किरदार है। और फौरी बैकफुट पर गए और ऊंचा शॉट खेला, बट शानदार कैच लॉन्ग ऑन पर। एक वक्त में हवा में उछले
बट बॉल को हाथ से जाने नहीं दिया। 2 गेंदों पर 2 विकेटें दिला दी यहाँ पर। और कादिर कश्मीरी जिनकी हम पहले भी बात कर रहे थे, अच्छा स्ट्रोक खेला था, लेकिन पेस बहुत अच्छा था और कैच भी उतना ही अच्छा था। करें आप कादिर कश्मीरी की तारीफ बनती है, लेकिन खुरम चकवाल की भी क्या बात है। कलीम 0 पर आउट। खुरम चकवाल हर जगह अपना रोल प्ले करते हैं। पहले बल्ले के साथ अपनी टीम को 118 रन तक पहुंचाया, 85 रन बनाए सिर्फ 26 गेंदों पर, और अब एक शानदार कैच पकड़ा है कलीम को वापस पवेलियन भेजने के लिए। 25 साल से खुर्रम चकवाल का नाम है पाकिस्तान की टेप बॉल क्रिकेट में। और आज भी अगर हम इनकी इनिंग देखें तो फिर इस क्रूशल मैच में, इस बड़े मैच में जो डू एंड डाई मैच था, जो सेमीफाइनल था इस यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का, वहां पर भी परफॉर्म करना, इस ओकेजन पे परफॉर्म करना ज़बरदस्त। मुख्तियार बैटिंग के लिए आए। अब देखते हैं मलंग्स का क्या आगे प्लान दिखाई देता है। तो एक वक्त था कि खुरम चकवाल पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे थे। इस दौरान फुल टॉस डिलीवरी थी, लेकिन आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी, मुख्तियार के रीच की थोड़ा सा बाहर थी। वाइड बॉल, बहुत ही क्लोज कॉल थी। इसी वजह से थोड़ा सा कादिर कश्मीरी हंसते हुए रुके भी थे, लेकिन ठीक है, खासी बाहर भी थी। अगर हम देखें टेप बॉल क्रिकेट 6 ओवर का फॉर्मेट है। इस बार वाइड बॉल भी है और दौड़कर रन्स भी हासिल किया यहाँ पर। तो खुरम चकवाल की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैं जिक्र कर रहा था, वो इस वजह से कर रहा था कि उस वक्त शायद जब उनको मौका नहीं मिला था तो कोई और होता तो हिम्मत हार देता, लेकिन खुरम चकवाल ने अपनी क्रिकेट जारी रखी, मेहनत करते रहे, टेप बॉल क्रिकेट में अपनी जगह बनाई, और आज किंग ऑफ एशिया के तौर पे जाने जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में जाने जाते हैं, और बेहतरीन अंदाज में प्रोफेशनली अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ा रहे हैं टेप बॉल क्रिकेट खेल के। एक्सेप्शनल स्टोरी। इस बार आउटसाइड एज लगा, गेंद ज्यादा दूर नहीं गई। इस दौरान में 1 रन ही बनाने का मौका मिलेगा दोनों बैटर्स को, कादिर कश्मीरी और जहीर कालिया ने। जो स्टार्ट दरकार था डीएचए दबंग को और जो एक्सपेक्टेशंस थी दोनों के साथ, उसी हिसाब से परफॉर्म किया दानिश। फिर सवाल यह है कि मलीर मलंग अब क्या करेगी। तीसरे ओवर का अख्ताम हुआ चाहता है और सिर्फ 34 रन ही बने हैं। 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं, उनमें डीके भी शामिल हैं। वेरी वेल बोल्ड। कौन खेलेगा इन गेंदों को? इतना आसान काम नहीं है। दानिश, आप जरा लेंथ तो देखें बॉल की, क्या शानदार बॉलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेहतरीन बॉलिंग हो रही है, अल्फाज नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए। किस जबरदस्त अंदाज में यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ कादिर कश्मीरी बॉल कर रहे हैं। 3 ओवर का अख्ताम हुआ चाहता है या मलीर मलंग्स 35 पे 2, इसके साथ कॉम बॉक्स में भी तब्दीली होगी। हमारी जगह आपको ज्वाइन करेंगे राना अशफाक और अनीस रहमान साहब। ओवर टू यू बॉयज। बहुत शुक्रिया दानिश अनीस और नसीम राजपूत। 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया है। 83 रन अभी भी चाहिए पहली इनिंग्स के स्कोर तक पहुंचने के लिए, और सिर्फ 18 गेंदें बाकी हैं, क्योंकि विकेटें 8 बाकी हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं अनीसुर रहमान, हमारे इंतहाई सीनियर साथी, जो कि अरसा दराज से खेलते भी आ रहे हैं क्रिकेट और रेडियो टेलीविज़न पे कमेंट्री भी करते आ रहे हैं, और फिलवक्त रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन डायरेक्टर हैं। अनीस भाई, गुड टू सी यू, खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राना अशफाक, और अनीस की जगह अनीस बिठाने का भी बहुत शुक्रिया। फर्स्ट नेम मेरा अनीस है और इनका सेकंड नेम अनीस है। बिल्कुल। 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर मुख्तार छछर 1 रन पे, मिमरान 20 रन पे नॉट आउट हैं, और मिमरान ने अब तक बड़ी मौसर कारकर्दगी का मुजाहरा इस इवेंट में किया है। और दूसरी जानिब हसनैन बॉलिंग करने के लिए आए हैं, जो कि जिस एंड से हम कमेंट्री कर रहे हैं ग्राउंड के मगरबी हिस्से से, वहाँ से बॉल करने के लिए तैयार हैं। और उनके सामने है मुख्तार छछर। छछर इनकी कास्ट है, मुख्तार इनका नाम है, इंटीरियर सिंधी से इनका ताल्लुक़ है। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद विकेट कीपर के पास। जी हाँ, बिल्कुल। टेप बॉल क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और इसमें यकीनी तौर पर आप देखते हैं, ख़ास तौर पर फास्ट बॉलिंग आपको अच्छी नज़र आती है। जो पेस है उसको वेरी करते हैं बॉलर्स और धोखा देने की कोशिश करते हैं बैट्समैन को।
और धोखा मैं क्रिकेट की लैंग्वेज में कह रहा हूँ, वैसे नहीं धोखा देते। 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अब तक स्कोर हुए हैं और देखना ये है कि कितनी लीड तो मुझे नज़र नहीं आता कि ले पाएगी, खसारे में ही जाएगी ये टीम। फुल टॉस गेंद और नो बॉल का इशारा स्क्वायर लेग पे मौजूद। अंपायर की जानिब से रन आउट का एक चांस भी बन सकता था क्योंकि नॉन स्ट्राइकर काफ़ी आगे चले गए थे मगर फिर वापस पलटे। अच्छा, ये पेनल्टी 2 रन की है वाइड पे भी और नो पे भी, इसको किस तरह से देखते हैं टेप बॉल में? नहीं, अच्छी है और पेनल्टी होनी चाहिए क्योंकि जो बुनियादी मकसद है वो वक्त बचाना है इसमें। तो अब आप अगर नो बॉल और वाइड बॉल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अच्छा है कि ये हार्ड बॉल नहीं थी, टेप बॉल लगने के बाद भी वो खासी देर तक सहलाते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है कि हार्ड बॉल तो अगर आपको लगती है तो फिर जो ग्राउंड में उस वक्त ऑन द मोमेंट जो फील होता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन रात को घर जाकर आप तो अभी तक खेल रहे हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ चोट ऐसी होती हैं कि जो लगनी ही चाहिए प्लेयर्स को, वो लगती हैं तब भी उससे मज़ा आता है। ज़बरदस्त। ये गेंद जो कि खेलने तो ऑन साइड पे गए थे, गेंद गई ऑफ साइड पे। इस दौरान ये ओवर थ्रो और एक की बजाय 2 रन बन गए। एक और फुल टॉस थी, क्या ये स्ट्रेटजी के हवाले से मुसलसल फुल टॉस कर रहे हैं या यॉक करने की कोशिश कर रहे हैं और सही लेंथ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, ये हम मजीद देखेंगे इस ओवर में। जी हाँ, अमूमन देखा गया है इस टूर्नामेंट में भी और इससे पहले जो KTPL के 2 सीजन में काफ़ी बॉलर्स जो हैं वो फुल टॉसेस करते हैं, मगर कुछ बड़ी महारत के साथ भी जो है फुल टॉसेस करते हैं। ऐसी फुल टॉसेस करते हैं कि वो बैट्समैन को क्रैम्प कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लो फुल टॉस की अपनी एक खासियत है और बड़ी करामत गेंद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कहलाती है और टेप बॉल तो बहरहाल एक डिफरेंट किस्म की क्रिकेट है। मतलब यॉक करने की कोशिश की है, स्ट्रेट शॉट, स्ट्रेट एज एन एरो और बॉलर के सर के ऊपर से खेला है, पावर मौजूद थी, फील्डर जाहिर है कि कोई नहीं होता बिल्कुल बॉलर के पीछे, तो 4 रन। बहुत उम्दा शॉट मिमरान का, बिल्कुल अंपायर के सर के ऊपर से और गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बाउंड्री से बाहर गई। बहुत ही सेफ शॉट भी ये कहलाता है क्योंकि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे अमूमन फील्डर होते हैं। ये ऐसी जगह है जो बिल्कुल खाली होती है, जिस तरह आपने कहा। हाँ, बिल्कुल खाली ज़रूर होती है, लेकिन इसमें शॉट में पावर भी होनी ज़रूरी है क्योंकि बहुत स्ट्रेट खड़े होते हैं लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के फील्डर। जी, अगर पावर कम होगी तो उनके पास वक्त होगा कि गेंद को रोक पाएं, लेकिन यहाँ पावर और अथॉरिटी दिखाने में कामयाब रहे थे बैट्समैन मिमरान, जो 24 रन पे 10 गेंदों में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 44 पर 2 विकेटें, एक और अच्छी गेंद, इस मरतबा लेंथ अच्छी थी और सिर्फ एक ही रन ले सके। और एक भी इस तरह की गेंद होती है तो यकीनन फ़ख्र महसूस करता है बॉलर और फील्डिंग साइड, क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट में अगर एक गेंद पर 1 रन बन जाए यानी 100 का स्ट्राइक रेट हो तो ये कुछ भी नहीं है। जी, अगर एक गेंद पे 1 रन बने तो 6 ओवरों में 36 रन बनेंगे और यहाँ चाहिए 110, 118, 120। तो इस लिहाज से एक ओवर में 18-20 रन बने तब कहीं जाकर बैट्समैन कुछ मुतमईन नजर आते हैं। जी हाँ, किसी ज़माने में हार्ड बॉल की एक क्रिकेट कराची में हुई थी और वैसे इंटरनेशनल लेवल पर भी होती है, क्योंकि उसे इंटरनेशनल का दर्जा हासिल नहीं है। इस गेंद की बात करते हैं। बोल्ड कर दिया इस मरतबा हसनैन की, बड़ी अच्छी गेंद और मुख्तार के पास उसका कोई जवाब नहीं था और क्लीन बोल्ड हो गए। जी हाँ, परफेक्ट यॉर्कर थी और अपनी जगह खड़े खड़े खेले थे। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों टांगों के दरमियान से ये गेंद निकली है और सीधी जाकर स्टंप से टकराई है, लेग स्टंप से, और क्लीन बोल्ड हुए। ब्लॉक होल में थी, सही मानों में ब्लॉक होल में थी और इस तरह से एक और विकेट गिर गई है। मुख्तार 2 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं, हसनैन ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया है 45 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मैं बात कर रहा था सुपर 6 क्रिकेट की, सुपर 6 बल्कि इसको यूं कहना चाहिए। कराची में ये टूर्नामेंट हुआ था। ये हमारे तमाम जो वेटर्स हैं बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ड्रेस्ड अप हैं और ज़बरदस्त अंदाज में मैच देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप एक ही ड्रेस में और मैच को एंजॉय करें। जी अनीस भाई। जी हाँ, एंजॉय कर रहे हैं और हमें भी एंजॉय कराते हैं जाहिर है। तो बात यह है कि सुपर 6 की मैं बात कर रहा था और उसमें यह था कि अगर एक ओवर ऐसा चला जाए जिसमें सिर्फ 2 छक्के लगे हों तो वो एक अच्छा ओवर, जस्ट लाइक मेड इन ओवर शुमार किया जाता था, वरना 4 छक्के लगना कोई बड़ी बात नहीं थी। हार्ड बॉल क्रिकेट थी, ये जहन में रखें, और हर ओवर में 3-4 छक्के आराम से लग जाते थे। अजीज़ अहमद कांदड़ो बैटिंग करने के लिए आए हैं और पहली गेंद को उन्होंने खेल दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब, ऑलमोस्ट स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन पे 1 रन का इजाफा किया। बिल्कुल ये मुझे याद है और शाहिद आफरीदी और वसीम अकरम का पेयर बना था
और दोनों ही बड़े बड़े छक्के लगाते थे, और इसमें ये भी था कि फिर एक सर्टन वक्त पे आके एक खिलाड़ी जो है वो जी हाँ, रिटायर भी हो जाता था। 32 रन थे, 32 रन से। 32 पर रिटायर होता था, 32 प्लस पर, यानी अगर 31 रन पर उसने छक्का मारा है तो वो 37 पर तो चला जाएगा लेकिन रिटायर हो जाएगा, और अगर 31 पर 1 रन बनाएगा तो 32 पर रिटायर हो जाएगा। तो इस तरह से उसके रूल्स बनाए गए थे। और मैं तो लोकल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स का जिक्र कर दिया, क्योंकि लोकल में वो टूर्नामेंट मैंने भी खेला था, और एक टूर्नामेंट में मैं बेस्ट बॉलर भी हुआ था उसमें। तो उसमें पूरे टूर्नामेंट में मुझे कुल मिलाकर 2 छक्के लगे थे 6 मैचों में। तो अब वो ऐसा था कि 1 ओवर में 2 छक्के अगर लगते तो वो शुमार होता है कि जी बहुत कम बहुत अच्छी बॉलिंग की है, कम छक्के लगे, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में 2 छक्के लगे थे। 46 for 3 4 ओवर्स के बाद। जी हाँ, 4 ओवर्स हो चुके हैं, 2 ओवर्स अब इस इनिंग्स के बाकी हैं। 72 रन के अभी भी खसारे में है या डेफिसिट में है, और अब देखना ये है कि इन आखिरी 2 ओवर्स में कितने रन और बन पाते हैं। लेकिन अभी तक जो बॉलिंग हुई है वो खासी कंट्रोल्ड बॉलिंग है, क्योंकि 4 ओवर में 46 रन अब तक सिर्फ स्कोर हुए हैं। उमर आए हैं गेंद करने के लिए, ये भी बड़े अच्छे राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और DHA दबंग से इनका ताल्लुक, और इन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में बहुत उम्दा बॉलिंग की है। बिलाशुबा, और अब भी उनकी जिम्मेदारी है कि एक बेहतर और अच्छा ओवर करें, जबकि दूसरी जानिब अजीज़ और मेमरान चाहेंगे कि मैक्सिमाइज़ किया जाए कि जो 12 गेंदें बची हैं, और इस वक्त अजीज़ कांद्रो स्ट्राइक पर हैं। पहले घुमा दिया बैट, गेंद थोड़ी ताख़ीर से आई, लिहाजा डॉट बॉल। ताखीर से आई नहीं की उन्होंने यही तो है असल चीज़, कि धोखा दिया उन्होंने सही मानों में, भागकर वो उसी तरह आए, जो उनका रफ्तार थी हाथ घूमने की वो वही थी, लेकिन आखिरी लम्हात में वो अपनी कलाई को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गेंद को स्लो फेंका है। और जाहिर है कि इंसानी रिएक्शन है कि फ़ौरन ही जो है वो जहन को अपने तब्दील करना चाहता है, अगर कर लेता है तो चौका छक्का लग जाता है, नहीं कर पाता तो इसी तरह बीट होता है। एक बार फिर बीट कराने में कामयाब हुए हैं, और लेकिन बैट्समैन दौड़े हैं, थ्रो दोनों एंड पे नहीं लगा, स्टंप्स में, ना स्ट्राइकर पे ना नॉन स्ट्राइकर पे। एक बाय का रन बना, लेकिन उमर ने दोनों गेंदें बड़ी अच्छी की। जी हाँ, उन्होंने तो अच्छी की हैं, लेकिन अजीज़ ने ये बाय का रन दौड़कर अपनी जान बचा ली है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 2 गेंदें बीट की थी, लगता यही था कि एक आध गेंद और बीट करने में कामयाब हो जाएंगे, और जस्ट लाइक डस्ट ऑफ गोल्ड। बिलाशुबा इस क्रिकेट में तो जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है डॉट बॉल, और 2 गेंदों पे 1 रन देना ही बड़ा कारनामा है। और इस गेंद को ऊंचा खेलने में कामयाब हुए, ऑफ साइड में गेंद लॉन्ग ऑफ पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी, 6 रन। जी हाँ, जितनी तेज़ होगी उतनी ही तेज़ दूर तक जाएगी। ये शॉर्ट पिच डिलीवरी थी ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन फ्लैट बैटेड स्ट्रोक खेला है, जस्ट लाइक कि जैसे आप टेनिस खेलते हैं उस तरह का शॉट खेला। बहुत ऊंची गई है और बहुत दूर गई है। बाज़ औक़ात ज़्यादा गेंद ऊंची चली जाती है, दूर इतनी नहीं जाती, लेकिन ये सब कुछ दोनों चीज़ें इसमें मौजूद थी। वाइड बॉल इस मरतबा ऑफ स्टंप के खासी बाहर ये गेंद। 2 अच्छी गेंदें करने के बाद 2 ऐसी गेंदें की हैं जिन पर एक्स्ट्रा भी हासिल हुआ है, 2 रन एक्स्ट्रा के वाइट बॉल के हासिल हुए हैं, और छक्का भी लग चुका है, यानी एक गेंद पर 8 रन दे चुके हैं 2 डॉट बॉल करने के बाद। जी हाँ, यही सज़ा मिलती है, अगर आप वाइड करेंगे तो 2 रन भी, अब बॉल भी दोबारा करेंगे। शॉर्ट राइजिंग बॉल, इस मरतबा पुल या हुक करने की अटेम्प्ट थी उनकी, मगर गेंद को एज कर बैठे हैं विकेट कीपर यासिर मुश्ताक के हाथों में, और वापस आ रहे हैं आउट होकर। जी हाँ, ये स्लो बाउंसर थी, और थी तो खासी ऊंची, लेकिन इतनी स्लो थी कि टाइमिंग सही नहीं हो सकी बैट्समैन की, और उन्होंने इसको हिट करने की कोशिश की, और हालांकि खासी ऊंची थी, लेकिन चूंकि बल्ला ऊपर से आ रहा था तो उसको टच हो गई। अगर टच ना होती तो शायद वाइड बॉल मिल जाती। 30 रन बनाकर मेमरान आउट हुए, 55 पे 4। 13 गेंदों पर उन्होंने ये 30 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 1 चौका शामिल था। तो खेले तो बहुत जा रहे हैं अंदाज से, लेकिन आउट जो है वो एक स्लो बाउंसर पर हुए हैं। 55 रन पर 4 विकेटें अब तक गिर चुकी हैं मलीर मलंग्स की, और 63 रन का भी उन्हें खसारा है। और इस ओवर के बाद, इसकी 2 गेंदें बाकी हैं, 2 मुमकिन गेंदें बाकी हैं, तो उसके बाद आखिरी ओवर रह जाएगा इस इनिंग्स का। उबैदुर रहमान अब बैटिंग करने के लिए आए हैं। 8 गेंदें इनिंग्स की बाकी हैं, जिस तरह अनीसुर रहमान ने जिक्र किया कि 2 मुमकिन गेंदें इस ओवर की बाकी हैं, क्योंकि अगर वाइड या नो हो जाएगी
तो फिर गेंदों की तादाद बढ़ती रहती है और बॉलर्स काफ़ी फयाजी के साथ कभी कभी वाइड्स और नो कर रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल इम्कान तो क्रिकेट में हर वक्त ही मौजूद रहता है कि कभी नो बॉल या वाइड बॉल हो जाती है। कुछ सॉ डस्ट आया है, कहीं शायद नमी महसूस हुई है ग्राउंड में, उसको कवर करने के लिए बहरहाल खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। हालांकि 2 गेंदें अभी इस ओवर की बाकी हैं। बहरहाल खेल अब एक मरतबा फिर शुरू होगा। उमर ही अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। 8 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया है उन्होंने, और ये 8 रन समझ लें कि एक ही गेंद पर बने हैं उनके, और 2 डॉट बॉल उन्होंने पहले की थी और अभी अभी उन्होंने कॉट बिहाइंड आउट कराया है। नए बैट्समैन उबैद सामना कर रहे हैं और उबैद ने पहली गेंद पर जोरदार अंदाज से लॉन्ग ऑन पोजीशन पर खेला है। फील्डर मौजूद थे बाउंड्री पर, उछलकर उन्होंने अपनी जंप को टाइम करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर। 6 रन। जी हाँ, यही ट्रेप बॉल की खूबसूरती है। भले ही पिछली गेंद पे विकेट गिरी है, मगर बैट्समैन बिल्कुल तैयार होकर आए हैं कि पहली ही गेंद पे छक्का लगाना है, और उसमें कामयाब भी हुए। 600 का स्ट्राइक रेट हो गया है उनका। गुड कैलकुलेशन। अगली गेंद एक मरतबा फिर ऊंचा खेले है। क्या 600 का स्ट्राइक रेट बरकरार रहेगा? देखना होगा। गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर। एक और छक्का। स्ट्राइक रेट 600 का बरकरार, 2 गेंदों पर 12 रन। ये अब अहम क्वेश्चन है कि कितनी देर बरकरार रख पाएंगे। मुझे इससे अजहर महमूद याद आया, जिन्होंने पहले कोई 4 टेस्ट मैचेस में 3 सेंचुरियां कर दी थी। पहले हम छक्का देखते हैं, और उनका स्ट्राइक, उनका जो रन रेट, जो एवरेज थी, वो एक मौके पे 400-500 की थी टेस्ट क्रिकेट में। ये फील्डर ने कोशिश की, डिड इट बाउंस इनसाइड? नहीं, अंदर गिरी है ये। जी हाँ, चौका होना चाहिए। वाज़ेह तौर पर हमें पहले जब शॉट लगा था तो नजर नहीं आ सकी थी। बहरहाल ये 4 रन का इशारा ये भी कर रहे हैं, 4 रन का इशारा। जी हाँ, बिल्कुल। इतना समझ रहे हैं क्रिकेट का। 61 रन पर 4 विकेटें गिरी हैं। क्या 5 ओवर्स का खेल हो चुका है। ये रिप्ले में कैच के करीब थे, हाथ से लगी भी है शायद, और बाउंड्री लाइन के अंदर गिरी है, तो ये 4 होगा, बिल्कुल 4 होगा, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। जी हाँ, जहीर से वो फील्ड्समैन। 5 ओवर पूरे, 65 पे 4। तो स्ट्राइक रेट जो है वो 600 के बजाय अब 500 पे आ गया है। सिर्फ 100 कम हुआ है, इसे मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये अब 600 पे दोबारा कभी जाएगा। एक सूरत में जा सकता है, नो बॉल पे सिर्फ नो बॉल पे, बस यही एक तरीका है कि नो बॉल पे वो कोई चौका या छक्का लगाते हैं तो शायद वहां तक पहुंच पाए। लेकिन बहरहाल ये तो खेल की खूबसूरती है। अब देखना ये है कि अजीज क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 गेंदें खेली हैं, 2 डॉट हुई थी पिछले ओवर में उनसे, और 1 रन वो सिर्फ बनाने में कामयाब हुए। 65 पर 4 विकेटें गिरी हैं, और आखिरी ओवर है ये इस इनिंग्स का, और पहली इनिंग्स इसके बाद मुकम्मल हो जाएगी। जहीर कालिया है बॉलर। ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, दौड़े हैं। विकेट कीपर ने कुछ फुटबॉल के अंदाज में गेंद को हिट करना चाहा, स्टंप्स में, ऐसा हुआ नहीं। 1 रन बना। जी हाँ, KTPL सीज़न 3 अब अपने इख्तितामी हिस्से में पहुंच चुका है। आज पहला सेमीफाइनल, फिर इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल भी आज खेला जाना है। कल इसका फाइनल है, और फाइनल से ठीक पहले वुमेन का एक मुकाबला रखा गया, जो कि एग्जीबिशन मुकाबला है। जी बिल्कुल। और अभी मैंने जिक्र किया था कि गोल्ड का जिक्र किया था कि कोई डॉट बॉल होती है, तो मेरा ख्याल है इसको बदल लेते हैं, प्लेटिनम कर लेते हैं, जो गेंद डॉट हो, और डायमंड कर लेते हैं जिस पर 1 रन बने, और थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएं तो फिर नाम रखते जाएं आप उस बॉल का कि जिस पे कितने रन बने हैं। जी हाँ, कांसी का तमगा भी हम रख लेते हैं, इसमें सारा कुछ ऐड करते हैं। ओह, फुल टॉस। क्या अंपायर से नो बॉल देंगे? जी हाँ, अंपायर ने अपना बाजू बाहर निकाला है। नो बॉल, फ्री हिट होगी। जी हाँ, फ्री हिट होगी, क्योंकि ये फुल टॉस थी, गो के इतनी ऊंची तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल इसको अनप्लेबल, जी हाँ ऊंची थी, और ये वेस्ट हाइट से ऊपर थी, और इसे नो बॉल करार दिया। लेकिन बहुत तेज़ थी, और बिल्कुल भी रिएक्शन टाइम नहीं मिला था बैट्समैन को, वरना वो कोशिश ज़रूर करते इस पर कोई हिट करने की। बहरहाल नो बॉल मिल गई है, 2 रन तो मिल ही चुके हैं। अब देखना यह है कि फ्री हिट पर क्या हासिल करते हैं उबैद। जी हाँ, 10 रन पर नॉट आउट हैं। 1 छक्का और 1 चौका उनकी इनिंग्स का हिस्सा है। जारहे मिजाज के बैट्समैन महसूस हो रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अब तक 2 स्ट्रोक खेले। अब तो उनके पास लाइसेंस है कि रन आउट और ऑब्स्ट्रक्शन के अलावा उन्हें आउट नहीं किया जा सकता।
और इस मर्तबा ऊंचा खेले हैं, आउट हो सकते हैं और आउट हो गए। और आपने लाइसेंस का जिक्र किया था, तो ये ज़रूरी आउट तो नहीं हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर फ्री हिट थी। मेरा लाइसेंस इनके पास होने के बावजूद भी वो गाड़ी सही नहीं चला सकते। ये आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि लाइसेंस तो इशू हो गया था बॉलर की गलती की वजह से, लेकिन उसका फ़ायदा इन्होंने इतना ही उठाया है कि एक सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। जी हाँ, आउट होने से बैरल बच गए, ये डबल फ़ायदा उनको हो गया है। वरना गेंद अच्छी थी और उस पर कैच भी हो गया था, लेकिन एक ही रन बन सका। 69 फॉर 4 और अभी 4 गेंदें मुमकिन गेंदें बाकी हैं। ज़हीर राइट आर्म ओवर, आए गेंद की यॉक करने की कोशिश, इसको खेल दिया है डीप पोजीशन में ऑन साइड पर। 1 रन बना और 1 ही बनेगा, तो इसमें डबल तो खाल खाल ही नज़र आते हैं। और 3 रन तो शायद आपने पता नहीं इस टूर्नामेंट में देखे हैं भरते हुए कि नहीं, किसी शॉट पर 3 रन। ये 3 रन इस सूरत में तो जरूर बने हैं कि वाइट बॉल थी और मैंने दौड़ के बात की, दौड़ के 3 रन तो आजकल इंटरनेशनल में बड़े मुश्किल है हो रहे हैं क्योंकि बाउंड्रीज छोटी हो गई हैं। तो 3 रन दौड़कर तो ओवर थ्रो की सूरत में बैरल देखे जरूर है मैंने। जी हाँ, 70 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 48 रन की लीड अभी भी है। बीट करने में कामयाब हुए और एट द सेम टाइम अनीस भाई हमें क्रेडिट देना चाहिए, ज़हीर कालिया को फुल टॉसेस करते हैं, मगर ज़्यादातर गेंदें ये बैट्समैन को बड़ा भांप कर करने में कामयाब होते हैं और डॉट्स करने में कामयाब रहते हैं। नहीं, क्रिकेट तो ऑल अबाउट कि आप दूसरे का दिमाग किस तरह से रीड कर रहे हैं। अगर आपने सही रीड कर लिया है और उसने आपका दिमाग रीड नहीं किया है तो बॉलर की कामयाबी है, अदरवाइज बैट्समैन जीत जाता है। तो असल बात यही है, क्योंकि अगर पता चल जाए कि ये गेंद कहाँ गिरेगी तो हर बैट्समैन छक्का लगा ले, लेकिन नहीं पता लगता, पेस का नहीं पता लगता, रीड करने की बात होती है, बॉडी लैंग्वेज की बात होती है, ये है बात। बिल्कुल स्पॉट ऑन, आपने सही कहा कि एक दूसरे के माइंड को रीड करना बड़ा ज़रूरी है। और एक और ये अच्छी गेंद, और इसीलिए क्रिकेटर को कहते हैं कि फिज़िकली फ़िट होने के साथ साथ मेंटली भी उसका फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जब बॉलिंग का शोबा आता है तो बॉलर्स को तो और भी आजकल, क्योंकि उनके लिए मार्जिन ऑफ एरर, जो मुख्तलिफ प्लेइंग कंडीशंस बनी हैं, बाउंड्रीज छोटी हो गई हैं, बल्ले अच्छे आ गए हैं, फिर रूल्स ऐसे बन गए हैं जिसमें बॉलर्स को तो और भी ज़्यादा मेंटली टफ और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बिल्कुल, सब कुछ बैट्समैन के हक में है। और कहा यह जाता है, जब मैंने सवाल किया था तो मुझे जवाब ये बड़ा अच्छा मिला था कि बैट्समैन के लिए एक ही बॉल होती है, बॉलर के पास पूरा ओवर होता है कि वो ओवरकम कर सकता है, लेकिन अगर बैट्समैन आउट हो जाए तो फिर उसकी वापसी दूसरी इनिंग में ही मुमकिन होती है या अगले मैच में। ओह, इस मरतबा लगता है कि ज़हीर को हमारी जो तारीफ है वो पसंद नहीं आई। उन्होंने बीमर सॉर्ट ऑफ अ बॉल की, नो बॉल और फिर फ्री हिट करेंगे। बीमर भी, वाइड बॉल भी, नो बॉल भी, सभी कुछ था इसके अंदर, क्योंकि बहुत लेग स्टंप के बाहर थी और स्विंग भी हो रही थी। जाहिर है कि जब पेस आता है हल्की बॉल में, जो टेप बॉल है या टेनिस बॉल है, तो स्विंग भी खासी होती है। और इतनी ज़्यादा ये गेंद स्विंग होकर लेग साइड पर गई कि जो लेग स्लिप में फील्डर खड़ा था उसने इसको रोका है और हाथ को झटकता रहा है कि उसको बड़ी ज़ोर से लगी है। और अंपायर ने लगता है कैप्टन को एक तरह से वॉर्न भी किया है शायद, और लगता है कि उनको ओवर करने से रोक दिया है शायद, जो वो कर सकते थे जितने बीमर्स वो कर चुके। जी हाँ, उन्होंने अपने कोटे के बीमर्स कर लिए और अब एक बॉल चूँकि बाकी है तो वो देखना ये है कि क्या होता है। बॉलर को तब्दील करना पड़ा है जाहिर है कानून के मुताबिक, और अब उनके पास एक गेंद है, अपने कोटे के बीमर्स कर सकते हैं। जी हाँ, ये गेंद बीमर करेंगे तो उन पर पाबंदी नहीं लगेगी। मुस्तफा हनीफ हैं ये बॉल करने के लिए, मगर ज़हीर ने अपने कोटे के कर लिए थे, लिहाजा अंपायर ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि 600 के स्ट्राइक रेट से करते हैं ये बॉल के नहीं करते, क्योंकि आखिरी गेंद है। क्या इस पर छक्का लग सकता है या चौका लग सकता है या डॉट बॉल हो सकती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नो बॉल भी हो सकती है, वाइट बॉल भी हो सकती है, सब कुछ इस एक गेंद पर उनको अपनी सलाहियत दिखानी है और उबैद को भी अपनी सलाहियत दिखानी है कि वो क्या करते हैं उनके साथ। मुस्तफ़ा अपनी वाहिद गेंद लेकर, और इस गेंद को ऑन साइड में हिट करने में तो कामयाब हुए, मगर काउ कॉर्नर से फील्डर ज़रा वाइड मिड ऑन की जानिब आए। दूसरे रन के लिए बैट्समैन पहुंचने में क्रीज में अपनी कामयाब हो गए। अंपायर ने बॉलर से गेंद ली और इस तरह
6 ओवर्स के बाद 74 रन 4 विकेट पे बनाने में कामयाब हुई मलीर मलंग्स। 44 रन की लीड उन्होंने कंसीड की है DHA दबंग्स को, यानी DHA दबंग्स जब अपनी सेकंड इनिंग्स शुरू करेंगे तो 44 रन के फ़ायदे के साथ या सबकत के साथ आएंगे, जो कि यकीनन काफ़ी बड़ी लीड है। जी हाँ, बहुत अच्छी लीड है, ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा है जो इन्होंने स्कोर किया 74। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा फ़ायदा होगा उनको, क्योंकि जब जो भी रन बनाएंगे उसमें 44 रन पहले ऐड होंगे और फिर जो है वो मलीर मलंग्स को फिर ये रन जो है वो हासिल करने होंगे। और इसमें अब कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है कि ये नॉकआउट मरहला है, सेमीफाइनल है और इसको जीतना ही है, और इसके अलावा कोई और चांसेस नहीं है, कोई और मौका नहीं मिलने वाला इनको। जी हाँ, जो कुछ करना है आज ही करना है, कल पे बात नहीं छोड़ सकते। ये इस इनिंग्स की हाइलाइट्स आप देख सकते हैं, कुछ बहुत शानदार स्ट्रोक्स देखने को मिले अप फ्रंट, और ये बड़ी खूबसूरत गेंद थी जिसमें बोल्ड करने में कामयाब हुए थे। उसके बाद फिर ऊंचा शॉट खेला गया जो फील्डर ने ज़बरदस्त अंदाज में कैच किया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बहुत ही खूबसूरत चौका, बहुत ही उम्दा गेंद थी जिसपे बोल्ड करने में कामयाब हुए बॉलर। ऑफ स्टंप से बाहर एक टेनिस खेलने के अंदाज में छक्का लगाया था लॉन्ग ऑफ पर, गॉट जॉइंड आउट हुए बैट्समैन। उसके बाद खूबसूरत छक्का हमने देखा। स्कोर कार्ड में 30 रन के साथ मिमरान नुमाया हैं, डाउन द ऑर्डर उबैद के 13 रन हैं और 7 रन हैं DK। दो विकेटों के साथ कादिर जो हैं वो टॉप पे हैं, एक एक विकेट मिली है उमर और हसनैन को, बकिया दोनों बॉलर विकेटलेस। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जैसे ही तीसरी इनिंग शुरू होगी इस मुकाबले की लाइव एक्शन के साथ आपको ज्वाइन करेंगे।
Welcome back once again from DHA Sports Club, Moin Academy, Karachi, where UPL being KTPL Season 3 is going towards the end, and the first semi-final is being played between DHA Dabanggs and Malir Malangs. And overall, DHA Dabanggs dominated so far, and they got a lead of 44 runs. It's a healthy lead in the first semi-final. Malir Malangs had no answer whatsoever. And the first inning, Malir Malangs, they really got real hammering from the batters of DHA Dabanggs. Chota Vicky was one of the then. Khurram Shahzad, they really dominated. And after that, the pacers of DHA Dabanggs, they really put the players of Malir Malangs way on the back foot. They are under serious pressure, and they have to play really well to make a fight back in all important semi-final. In the com box, I have been joined by Kainat. Kainat's complete dominance from DHA Dabanggs. They are really on top. Well, definitely. They have been a very dominating side throughout the tournament, and this is the character shown by these two batters who are going right on the crease now to again set a big total for Malir Malangs. So both the bats, DHA Dabanggs and Khurram Shahzad, almost got 100. He got 85 in the first innings, so he was quite unstoppable, whereas Waqas Sher got to 25. He didn't face much balls, but he was mere a spectator in most part of the innings, whereas Khurram Shahzad was really hitting in different corners of the ground. Some work to be done again by the groundsman to ensure the safety and of front foot landing on the popping crease. So far, Waqas was, I didn't see him in that form that we have seen him in the recent games. But yes, he did a good cameo role with Khurram Shahzad, and he had all the lead, getting all those runs for DHA Dabanggs and setting a big total for Malir Malangs. Pressure certainly on Malir Malangs. They are way behind. As I mentioned, they are 44 runs behind. So anything around 70 or 80, even they don't play para cricket in this innings, they will be in a position to put a huge score to chase. Waqas Sher will be on a strike, and he was the one who was dropped in the first ball of the first innings. And overall, the fielding hasn't been up to the mark. They dropped catches, they missed run-out chance as well. Ground fielding wasn't up to the mark too. Well, surely Khurram Shahzad, the non-striker, the striking player from DHA Dabanggs. You might be having MG starting the first over again, and he did bowl exceptionally well, but again, few drop catches made him a little bit upset. And MG for Malir Malangs. Yeah, the course of the game would have been different if they had picked up Chota Vicky in the first ball of the first innings, and I saw three men were converging and no communication was there, and as a result nobody got there. And after some hammering, Khurram Shahzad was dropped at extra cover, so it's all set. Will it be an improved performance from Malir Malangs? That's the question we have. They caught just 74 for the loss of 4 wickets, and they really faced the music because DHA Dabanggs fast bowlers, they were too good, too hot to handle for Malir Malangs. They bowled quite beautifully. They hit the deck hard, and they bowled very full. Well, this will be interesting to see how much of a lead can DHA Dabanggs have from this point, as it's 44 runs already. First ball of the new innings. Outside the off stump. They try to chase it initially. Wide giving. And the stump is blinking here. That is quite interesting. But a new type of technology Kainat has been discovered. Well, quite old actually, not really new, but we have seen this in first time during season 3 of KTPL. So yes, it's interesting, of course, it's easier, but this was lighting for no reason at the moment. Yes, they have to be in the air when they flash on. They are not supposed to flash on when they are in the contact with the stumps. So there is something wrong. Umpires are swiping the position of bails.
Quite a few times we saw one of the spectators nearby, they were using the laser light, but this is different kind of light, and I hope it stays off when they're in contact with the stumps. Big shot, land ball, put away in style. What a wonderful blow. Goodness me, how good is that from Chorawicki? Well, this is what Waqas is all about. These kind of shots, and that confident one. Again, full-bladed shot towards the straight boundary. Extending his arms towards the ball. And a great shot by Waqas and a great start by Waqas. Nice and relax the camp of DHA Dabanggs. And they started off beautifully again. The length ball. Waqas was on the receiving end. He was a little quiet in the first inning because Khurram Shahzad was dominating. He faced most of the balls. He got just 25. This could be his innings though, as the brand new innings has just begun. He absolutely nailed it. That's a good one from Majid Goli, drifting off the leg side, very full, off the boot. Well, yes, indeed, a good ball. He will have to bowl these kind of deliveries more rather than bowling on a good length area, because it's always easier to pick a good length delivery when you're trying to hit over boundary. They have to be really careful as far as the length is concerned. Out, could be out, could be out. Oh, he's dropped it. It was a tough one from toe end of the bat. And the fielder dived forward. It was never easy. I think he's hurt himself. Well, I would rather say he didn't dive, he got slipped, because of course they're now wearing spikes and those rubber spikes are easy to slip. See, again, he slipped on trying to catch that ball. Well observed, Kainat. He really slipped it. He didn't pick it up, no real anticipation, and he slipped. So they're not using the spike shoes, and that is a problem the cricketers face. In the end, he wasn't even close to make any kind of contact, but Waqas was certainly lucky. It landed in the safe zone. Now Khurram Shahzad, he was absolutely brilliant in the first innings. It's the second phase of his show. And his Cummins in innings in style. It goes for 6, I guess. It's a flat one. Beautifully timed. Yes, umpire is waiting for the confirmation. That was some shot. Wrist work was there. And as far as my observation is concerned, the ball landed just beyond the rope. Exactly the same way to start the innings, like the first one. And again, a flick shot, an easy flick shot by Khurram Shahzad. Top class shot, really. It was hard and flat. Used the pace, and the wrist work came into play. This is not to show. The kind of player who has really displayed great stuff with the bat. Some big shots, some shots towards the offside, and it was a flat one. Six finally given. Marvelous shot from Khurram Shahzad to begin his new innings. Very risky and what superbly timed. Once again drifting down the leg side. It's not the area for the bowler to bowl Khurram Shahzad. Couple of runs to the total. Yes, we have seen in the last inning as well, MG got a little bit of under pressure when he was bowling to Khurram Shahzad and bowled all those wides. Well, he will have to, get hold of his nerves
because Malir Malangs need those wickets at the moment. In the air and safe. Over the rope for 4 more. Wonderful strike again. Wit was offered. And thank you very much from Khurram Shahzad. A good thing about Khurram Shahzad, he plays on the merit of the ball, and again it was an outside off-stump delivery and he played towards the extra cover region. One of the most difficult shots in cricket. Could be wide again. Yes, wide given. He's really struggling, Majid Goli. He's conceding boundaries, he's conceding extras. There's nothing going once again in Malir Malangs' favor. Look at the score. The first over is still going on and they are already above 20. Well, supporters are coming up in big numbers now. It's a good thing. Cricket is being promoted at every level. Not quite off the middle. And will they come back for 2? Could be tied. Throw is not good enough. What a start. Flying start from DHA Dabanggs. 25 for none after 1. Flying start again from DHA Dabanggs, 25 for none. And look at the equation. They are 16 runs ahead. So the pressure building up in the camp of Malir Malangs. They have to find a way to stop the flow of runs. They dropped few catches. They didn't accept the chances. They have to create chances again. And they need better response from their fielders. Some problem with the shoes of one of the bowlers and umpire. They don't want any further delay. Fazal Afridi is sharing the new ball, the left armour. This is the factor of the dew only, because the front foot keeps on slipping on the crease. It's never easy to have a great smooth rhythm when you have dew factor and you're not wearing those spikes, just wearing rubber spikes, and they all get wet. It's a challenge for the cricketers, and they have to play in this way, and they have to ensure their safety as well. But at the moment, and they are under deep trouble, Malir Malangs. Will he change the fortune, Fazal? It goes offside. Chora Vicky. One bounce into the fence for 4. What a start that is. Wit was offered, very full and beautifully struck. Well, good hitting by Waqas as he's trying to hit straighter towards the long on and long off boundary. It's a good sign, because if you play straight, it's lesser chance of getting out, and some great elevation by Waqas. Length wasn't bad, but it was a top shot because Wit was offered. Line was the problem. He missed the radar this time. It's quite quick, but certainly not within the stumps. Wide given. Plenty of extras have been given by Malir Malangs. They can't afford to give so many extras. They are already behind. Crowd in good numbers. They enjoyed first the show of Khurram Shahzad. And very soon we will see every seat will be taken. Well, yes, I would like to call on people here to watch the crowd in big numbers so that they can support cricket. Wide again, he has to reload. Fazal Afridi now struggling. The first ball outside the off stump, followed by 2 leg side wides. What's happening here with Malir Malangs? Well, the body language seems to be going down, and it is not a good sign, as they still have 2 more innings, and anything can change in any moment. This is cricket, my friend, and you need to be on spot, and your mind should be exactly what you're doing at the moment only. Just
quite right. If they pick up a couple of wickets, they can certainly pull the things back in their favor. Big shot on the rise. Is it a chance or 6 here? Just above. Just above. Once again, umpire is not too sure. 4 given. 4 given here. It was high in the air. It was a certain chance, but no one was close enough to pick up a catch. Picked it up from outside the off stump. Boundary conceded. A little bit of short ball and just extending his arms. Whatever you get outside, a little bit of off stump, that definitely should be a boundary. It went in the air for a while. It stayed in the air for a long time, but nobody positioned himself to catch it. It was quite catchable because usually we see the fielders stay in the long on. Pulled away, not cut off the middle. Should be a boundary. 4 more runs are flowing here for DHA Dabanggs. Well, I think the role has shifted. Khurram and Waqas, they have shifted their roles, and Waqas is playing exactly like Khurram played in the first innings. Getting the opportunity to hit every ball. He is trying to get maximum, still maximum for DHA Dabanggs. He offered some pace, but he was on the shorter side. And that's a fine pull shot from Chota Vicky. 16 of the over so far, still half of the over to be bowled. Some changes are being made. It's a square leg has been pushed back. The deep mid wicket coming inside the circle. Low full toss, good one. No connection whatsoever. A precious dot ball for Malir Malangs. Finally a dot ball for Malir Malangs. They will have to bowl more of the dot deliveries and at least have few wickets early on. I mean, this is still the second over. They will have to get these 2 destructive batters out. Khurram Shahzad hasn't faced many balls, just 3 his ball has faced. He goes for it towards long on, should be cut off. Oh goodness me, that sums up the fielding effort of Malir Malangs. Boundary conceded, 3 runs extra gifted. This is not quite acceptable. What a sloppy fielding. He was not in position and very casual towards the ball, even though he was going towards the ball, running fielding, but again he was very casual on the boundary. They need to save every single run, but given 4 instead. They continue to leak boundaries, and Fazal wasn't happy, quite rightly so. Big full toss, hasn't timed it. And it was a tough one, missed by Malir Malangs again. Couple of runs have been taken. And once again, not a wild throw, and nobody was there to collect the ball. So they are not learning from the mistakes. It's 47 in 2 overs, 91 lead for DHA Dabanggs. KTPL Season 3 is being watched in different corners of the world, and more than 84 channels are broadcasting this live on television as well as in different pages of social media. You can see African SP, NBC, Willow TV, Sub-Sahara, and you can catch live action in Pakistan on Jio Super, the first sports channel of Pakistan. Oh, that's a great initiative by all the channels to show tape ball cricket, because it's growing so rapidly and it's getting on it's on now globally.
So finally, Khurram Shahzad has got the strike back, and complete contrast to the first innings where Khurram Shahzad was dominating and Chota Vicky was at the non-striker's end at most part of the innings. So still 4 overs to go, and Khurram Shahzad can continue in this typical fashion. He's in outstanding form. Ubaydur Rahman has got the ball now. So entertainment will continue as Khurram Shahzad has got the strike. He also got real hammering in the first innings as well, Ubaydur Rahman. Margin of error is so minimum against Khurram. I would like to see Malir Malangs get back their form. Big full toss. Is it a catch or 6? Gone, but it doesn't matter. We have to wait for the umpire signal. Yet no ball has been given. Wasn't timed perfectly. And they cannot believe it. The fans of Malir Malangs. Khurram Shahzad survives here. It was a huge full toss. Yes, indeed, it was a full toss and didn't time well. Could have been a 6 too, but again, it was a no ball at the end. Finally got Khurram, but on a no ball. How disappointing. So free hit. Waqas has got the strike back. Got him, doesn't matter. They are coming back, Kainat, as you saw. As you said before, but it doesn't matter. It's a free hit here, and Khurram Chota Vicky try to heave it. So nothing going in any form in the way of Malir Malangs. Within the stumps, cleaned up. Big full toss. Has it got enough length? Should be taking it long off. No mistake. So finally wicket falls. Full toss hit high on the bat. No timing at all. And Chota Vicky has to walk back. Well, Waqas won't be sad. He made 25 of 10 deliveries. And a full toss didn't time well. Waqas was not in that form that we have seen in previous games. A good catch. Finally a good catch at the boundary. Waqas' share went for 25 on 11 deliveries. 50 for 1, DHA Dabanggs. $50 for 1. So Chota Vicky has been replaced by Arsalan Bhatt, who is also a very exciting cricketer. He is also in good form. And Malir Malangs have struck for the first time in the match. They didn't pick any wicket in the first innings. They got real hammering. Now Arsalan Jamshed, he is equally devastating. Finally, next better from DHA Dabanggs. Got a chance to bat. Let's see what he has to offer and how many runs he scores in this innings. He got a wicket on full toss, but it doesn't mean he should bowl full toss to Arsalan as well. Oh, goodness me. 2 men are converging. Chance or 6. It's over the rope. What a way to begin the innings. Arsalan, the man in form, as I mentioned, picked it up from outside the off stump. He got plenty of height and enough length to pick up half a dozen. What a wonderful start. Again, getting it from the very bottom of the bat. It was not really a full-bladed shot as well, but yes, rightly timed. Not quite off the middle, but swing of the bat was superb, and that's a sign of the man in form. Arsalan, the man with the confidence, the man with the runs in under the belt. Dangerous customer. He goes again over long off. 6 more. Comfortably over the holdings. Terrific batting from Arsalan. Arsalan is all set for hitting maximums on every delivery. Outside off stump and put it towards the off region of the field. We didn't see his brilliance in the first innings. No wicket fell.
And he was desperate to come out and show his brilliance. Goodness me, what a start that is. Pitched up outside the off stump. And as a result of a couple of maximum, there is a mini conference on where to bowl. The length was a problem, Kainat. This wasn't one of the best deliveries, and he rightly got punished. Outside the off stump, we have to wait for the umpire signal. He really reached for that. One off the over and wide not given. He can't believe it. Arsalan? I don't think that was a wide. I mean, it's a tall man, and also if you're talking about the wide line, no, I don't think it was a wide. That's a close one. We have seen a number of interesting decisions in this competition. A rare dot ball, nevertheless. So will he survive in the last ball? Over number 3. Oh, missed it. Full toss on leg stump, missed it. So he finished his over with a couple of dot balls. And double D, 62 for 1 after 3 overs. And they are 106 runs ahead. The dominance continues from DHA Dabanggs. They are playing quite outstandingly here. Now time for the change in voices. Falak Sher and Rana Shwak will pick up the commentary now. Thanks a lot, Farooq Riaz and Kainat Imtiaz. Yes, they are bossing the game. The DHA Dabanggs, they are playing like the Bungs. 62 for 1 in the second innings. And if you add the 44 more, you can see it down under the 62, 106 is their lead actually or effectively. Welcome, FS Malik. Thank you, Rana. Seems to be in a disarray. Malangs, having said that, in the group stages, they started their campaign with 5 consecutive victories on the bounce. They've been demolished here tonight in this big stage. Absolutely. In first innings, Khurram Chakwal went berserk. He was hitting them in every part of the ground and hitting them with authority. And in second innings, DHA got off to a terrific start again. Fazal Afridi went for 22 in his first over, starting his second over. Down the leg side, it has been bowled and it has been called wide as well. We'll have to be very careful bowling to somebody like Khurram Chakwal, who's got a very wide range of strokes. You bowl short, you bowl outside the off stump. He has answer to every line and length. This is what we have witnessed in the first innings. So the bowlers will have to be careful with their lines and lengths. Yes, definitely. They've got to be very careful. This one is in the air. Fielder is trying to get under the ball, and he has come under the ball, and he caught that one, but it has been given a no ball again. Oh mine, it could be very costly. Well, I tell you what, overcompensating the bowlers, trying for those yorkers in bowling high full tosses. This is the second time Khurram has been caught, and have a look at that. It's clearly above the waistline and rightly called by the umpire. Yeah, that was a fair call. And now batsman has the license to have assaulted the bowler. Yes, he got that away and got that away in style. And it has gone for 6. Magnificent batting. Well, if you have that kind of license, then drive your car with the 5th gear. That's gone miles. Have a look at that. Bang! That's out of here. Absolutely. Hit that one through the line, and the back lift was terrific. Oh, another full toss. Another full toss, and that's going down towards the boundary for 4 as well. We will have to wait and see another no ball. 6 more. Oh, my word. This will add the insult to the injury. Dear, oh dear, not learning from the mistakes the bowlers of Malir Malangs. Have a look at it. It was a big one. Almost
on his shoulder height. I just fail to get understand what is happening with them. What they are looking out of sorts. They're looking down and out. And have a look at the crowd. They have turned up in good numbers here at DHA Sports Club, Moin Academy, and they wanted to see a cliffhanger. They wanted to see a good contest between ball and bat. But so far it has been all for the DHA Dabanggs, and there's another one. Fielder was trying to stop that one with the boot. He couldn't quite able to do so, and it's gone for 4. Yeah, sloppy bit of effort there by captain. Tried to stop it with the boot. Have a look at that again in the replay. It was traveling like a rocket to the boundary. And there you see, it was Majid Gholi who landed on the ball rather than planting his foot behind the ball. Again, it is in the air, and I think it has come down right in front of our commentary box. Wow, Arslan is absolutely having a go at everything. Well, at the moment, the kind of hitting we are witnessing, it's very hard-looking tape ball, and that's the only way to soften this tape ball, smack it into the concrete. Wow, short yard. He absolutely banished that one. He has driven that away. This is running away towards the long off boundary, but this time fielder did pretty well. He did able to stop that one with the boot, but still can't prevent the batsmen from taking at least 2, although they wanted the 3rd as well. It was struck very powerfully, and it was out of the screws, out of the middle of the bat. It went to the fence in no time. Did well, Majid Gholi, on that occasion to stop that ball. Otherwise, it was traveling pretty fast. And take a look at the Fazal's figure. 1.4 was none for 51. Oh my, he has bowled 10 deliveries. It means he's giving away more than 5 per ball at the moment. Incredible. Oh, batsman just tucked that away into the leg side, and it has been overthrown, but the single is taken at the end. So now he has gone for 52 of 11 deliveries. The Fazal Afridi. Not many times you see a bowler going for a 50. And it's not a good thing to have against your name if you are a bowler. They have come in good numbers. They're watching the match with keen interest. As I mentioned, they wanted a good contest between bat and ball. But so far, DHA Dabanggs have dominated the game. Fine leg will able to cut this one off. Leg buys. Yeah, missed out there. Khurram to end the over. 4 done. It's 93 for 1. FS, do you see the credentials and cuts and the talent in the Malir Malangs? Can they go about 170, 180 chase? Can they get it done? Well, they will have to play an innings of their life if they are to make a match of it. By the look of it, they are out of it. I'm so sorry to say they are out of it because no competition, no resilience shown by them so far in this semi-final. It was a big stage. They've been one of the high-rated teams, I would say, because winning the first 5 encounters, who would have thought that in the semi-finals this will happen to them? And they're not believing their luck as well, what is going on in the middle at the moment. No, we haven't seen any retaliation so far from them. I will be surprised, as you rightly mentioned, if they're able to redeem themselves back in this contest. But at the moment, they're absolutely out of it. You're quite right. But one never knows in cricket. Majid Gholi has been given the ball to bowl his 2nd over, but he went for 25 in his 1st over. Too many. Yeah, almost all the bowlers who are picking the ball and coming to the bowling crease are going for the journey, going for that many runs, which is not acceptable at any level, I will tell you, even if you are playing tape ball. But here, in the big stage, surprising for me at least. Penultimate night of KTPL Season 3 here at DHA Sports Club, Moin Academy. This one is hit away, and hit away
beautifully for a beautiful 6. Well, I can tell you one thing. I just love watching this guy play. Have a look at that. Sheer timing. Half drive, on drive. And he's cleared the fence by some distance. Have a look at that for a check drive. Absolutely magnificently. He timed that one. Didn't try to hit too hard. Just timed that one perfectly and placed it precisely over the fielder's head. And it went all the way. My God, it's some batting. Khurram has got that away and got that away beautifully into the leg side for 4. Well, it had to be something like that to beat that fielder. It's bludgeoned away just a couple of meters to the left of the fielder in the deep, and he had no chance whatsoever. He's playing some pure cricketing strokes as well. They already have gone past 100. 103 for 1 is the current score, and 147 is their effective score. Still 10 deliveries to be bowled. Khurram has driven that away, but there is a protection at the long on boundary. He's going to get single, and it will be a sigh of relief for the bowler. And let's not forget, in the first innings, Khurram has equaled the highest first one innings score by an individual, matching the score of 85, which was struck overnight by Hassan Painda. Yeah, and he's coming to the party in a big contest. Oh, Arsalan has given this a go. Fielder is paddling back a little bit. Oh, has he grabbed it? Yes, he has. He paddled back a bit and then grabbed that one nicely, so the wicket goes down here. Something to cheer for Malir Malangs. It was miles in the air, and on the second attempt, have a look at that. It took a while to come down, and on the second attempt, fielder managed to hang on to that. Jamshed made 35, well made 35 of just 11 deliveries. 1 of 4 for 2. Mustafa is the newcomer. I was talking about Khurram Chakwal. It is a sign of a champion player to perform on a grand stage. And semi-final is a knockout stage. It's a grand semi-final. And he comes up with the terrific performances in both the innings. Umar Shahzad has made his way out into the centre. Well, champion players always rise to the occasion. Rightly pointed out, Rana. Oh, that's outside the off stump. Batsman did have a go at that one. And he has been able to bowl a precious dot ball, the MG. It just reminds me of the performance of Boom Boom Afridi in the 2009 World Cup. In the semi-finals against South Africa and in the final against Sri Lanka, where Pakistan went on to win that World Cup. Yeah, under the captaincy of Yunus Khan, Afridi getting half centuries in both the semi-final and the final. This one is going straight down the ground, but there is a man back right at the boundary. Single to finish the over. 5 have been sent down. 1 of 5 for 2. This is the penultimate night, as I mentioned earlier. Tomorrow will be the final night of the KTPL Season 3, and final will be held. But right before the final, there will be an exhibition match of women. And our production team, Mr. Farooq Suleiman and Rehan Bhai, and all of our camera crews, all of our technical staff, commentators, anchor persons, everyone has done a terrific job. And I think to decorate your screen for this entire event, and we are being watched throughout the world. More than 84 channels are taking our coverage, and it is produced by Jio Super. Ali Chota has been brought on to the bowling attack.
great work by our production team, undoubtedly. Oh, wow. This is going into the hands of the fielder. Oh, it is, yes. Batsman thought for a while that he got away with that one. It was in the air for a long, long while, almost for the eternity, but fielder was there and took that one. Umar Shehzad goes for 105 for 3. Well, Ali Chota has been one of the bowlers who has impressed me a lot, I will tell you, in this competition. But he was overlooked in this match, I will tell you, in the presence of somebody like Majid Gholi and Fazal Afridi. Hasn't had his time with the ball. He's been given the last over in this innings as well. Yeah, at times when you have big names, somebody can get under bowled. So he's going to bowl only 1 over because this is the final over of the innings. Under the other circumstances, he would have bowled 2 overs rather than the 1. Salman Khan is the newcomer. 149 is the overall lead. That one pitched outside the off stump. Batsman didn't play at that one, and umpire took a bit of time to call it a wide. He delayed his decision, not quite sure why. And there you see happy faces. Oh, thank you for coming. Thank you for coming. And there he goes. Both are smiling away. Got you excited, Rana, those fellows? Not quite sure why, but I always get excited by these gestures. And batsman got excited there as he got that away and got that away all the way for a 6. There you go. It was a rank half volley. And Salman Salu says, I'm going to have a go at that. And there you go. Out of the middle of the bat, 6 more. DHA Dabanggs batsmen have played a lot of good strokes. I mean, they played a lot of cricketing strokes. The last 6 was a perfect hit. He didn't try to hit across the line, didn't try to use the horizontal bat. Bat was absolutely vertical, and he just went through the line. Tell you what, Khurram Chakwal has been opening the innings in this second innings as well. Usually comes as an opener, and he has faced only 9 deliveries, and we are almost through the innings, just 3 deliveries to go. Not very often you see this sort of stuff. Yeah, he stayed the spectator most of the time because he was staying at the non-striking end and watching his partners to doing the damage. Yeah, you won't mind staying at the non-strikers end, the kind of show he's been witnessing from his partners in Waqas Sher earlier on, and then Arslan Jamshed chipped in with 3 or 4 maximums. And now Salman Salu getting into the act, joining the party. Malir Malangs got to play out of their skins. They need to come up with the magical performance if they want to win this contest. This is in the air. Has he timed enough? Oh, yes, he has again. What a great timing on that occasion by the batsman. Well, I tell you what, it's a big boundary, and it didn't come off the middle of the bat, but this is tape ball cricket for you. Have a look at that. It was a short arm jab and got the result in his favor, did the batter. Just presented his bat in front of his legs. Feet were stuck. Feet were not moving at all, but still got it over the line. Wow. And he goes again. And goes well as well. Another 6. So 6s are coming like a singles here. Well, how well did he execute that stroke? Have a look at that. Just the wrist work. Very powerful wrists
of Salu, taking that ball all the way to the boundary for 6. Last ball of this innings is coming up. But it won't be a last ball, because it's going to be a wide, I reckon. Yes, it is. Wide called, although batsman is being run out as well. Runs and the newcomer will go, but ball will be bowled again. Yeah, 2 runs of the wides will be added to the total, but Salu has to take a long walk back to the dugout. Good bit of cameo by him. Have a look at that again. Good awareness by the fielder. No worries whatsoever. Easy run out for Ali Chota, the bowler. Yasir Mushtaq, the captain, has come out to bat, but he must be at the non-striking end, because run out occurred at the non-striking end. So Khurram Chakwal is facing. And Khurram gets that away into the leg side. There's a man back at the long leg boundary who comes up a little bit. They are turning back for the second. Oh, and now they are turning back for the third. And this is going to be out or not. Umpire has referred it to the third umpire. Let's see what will be the verdict of the third umpire. I get the feeling we are going to find the better short here. It was good work in the end, but not before they managed to pick up 2 runs. Yeah, you got it absolutely right, Falak. He should be given as out, but a couple of runs would be enough for them. So they have finished their second innings at 129 for 4 in their allotted 6 overs. It means Malir Malangs will be requiring 174 runs for the victory in 6 overs. It's going to be a gigantic ask. Not impossible, but not easily possible as well. Yeah, I cannot argue with you here. Right then, it's going to be a start of the run chase, but before that, we are going to have a change in the commentary. It's going to be Zishan Khalid alongside Farooq Riyaz. Thank you very much, Falak Sher. Brilliance from DHA Dabanggs once again. Shahzad and Chota Vicky played outstandingly once again. They continued to amaze, and the way they play the shots in different corners of the ground were absolutely a treat to watch. That was a catch taken. First wicket fell. Smash along the ground. Big shot over wide of long on, high and handsome. Beautifully lifted with pure timing. Pulled away on that occasion. And they didn't leave any opportunity. Big heave to the onside. The catch was taken in the second attempt and timed it beautifully to the onside again. Plenty of high shots, but was caught well inside the boundary. And smashed it for 6, pitched up outside the off stump, beautifully played and timed it quite beautifully. Interesting shot. And it went over the boundary as well, flicked away. Lovely wrist work, and the run out happened in the last over. And run out again. Plenty of damage has been done. DHA Dabanggs right on top. They are well and truly favourites to win the semi-final. That's a healthy scorecard we have. 129 for 5. They got Waqas 25, Khurram 25. Arsalan played beautifully for 35. 1 for Umar, 18 for Salman, and Mustafa got out, run out for naught.
And that's the bowling card. Majid Kohli 1 for 37, none for 52. Fazal extremely expensive, 1 for 15 for Bad, 1 for 20 for Ali. And they conceded 21 extras. This is huge. So both the batsmen are absolutely ready. And now I have been joined by Zishan Khalid in the com box. Thank you so much, Farooq. Well, it was literally fireworks from DHA Dabanggs in both the innings. Both times they managed to score over 100, and that means the lead now is of 173. As Falak mentioned earlier, it's not impossible, but it's going to be really difficult for Malir Malangs to chase down this target. 174. No side has ever done that. No side has ever achieved 150 so far in this campaign. They will definitely have to bat out of their skins, even if they want to get closer to the total. And a lot will depend on the opening pair of Malir Malangs, Mimran and DK, who have done bulk of the scoring so far for them in the tournament. The middle order hasn't clicked. It did not even click in the first innings. That means they will have to make sure that not only they provide them with a very good start, but they score runs briskly. Mimran was the leading scorer for Malir Malangs in the first inning, scored 30, but he just kept on losing his partner. And DK has been in not that good form in previous two games as well. Missed out in the previous innings, but he'll have to lead from the front. No surprises, Abdul Qadir Abbasi, well, what a time he's having. It's just his third game, and so far he has created so much impact. Outside the off stump, trying to smash it. So it starts with a dot ball opportunity missed by Mimran. Well, they will have to take these opportunities. In fact, even they'll have to make those good balls into boundary balls, these openers. It's not going to be easy because DHA Dabanggs have got Abdul Qadir Abbasi, Zahir Kalia, Umri Peser, who has been the leading wicket taker so far for them. Missed it again. Half tracker, that was the opportunity again. Mimran was in good form in the first innings. He got some runs. He's got some pace, but so far these two deliveries were slightly gently bowled outside the off stump. Could have hit up them on the leg side on both of the occasions, but it's the pressure telling on the batter right now. Certainly. Missed it again off the leg. Dot ball, no chance for a run here. They're still on note, Malir Malangs. Cannot afford to play dot balls at this stage of the innings. Malir Malangs, they are chasing a huge target, 174 that is. That means they need to score at least 25 or 30 in almost every over. Well, the asking rate will go up dramatically with every dot ball. And half of the over is gone and they are still on note. So far so good from Abdul Qadir. Big shot to the onside. Nobody's out there, but it doesn't matter. He has cleared the rope and also the boundary. Beautifully played, first 6 of the innings. Yeah, even if there would have been a long on or a failure at mid-wicket, that was timed so well by Mimran. It was pitched up, not much pace behind that. Once again, going with that angle and getting a maximum to his name. Lovely shot. Cleared his front leg, timed it beautifully. Flat 6. Finally got the connection. Got him! Clean him up. Beat up with a beauty here. Abdul Qadir was right on the block hole. Yorker. And Mimran has to walk back. Brilliant comeback this from Abdul Qadir, hitting the base of the off stump. And this is DK. In fact, this is Mimran we are talking about. That ball just tailed in the air. And he was in no position to get any connection whatsoever. So first blood has been drawn by DHA Dabanggs. It's the DK Mimran who has been dismissed. Malir Malangs are now 6 for 1. Wonderful delivery. Yorker delivered to Mimran. And he's out 6 for 1. 6 to his name. It's basically Mimran got a maximum, not a DK. And he, after hitting a 6, he got out. He chipped it beautifully over the ring. One bounce into the fence for 4. Lovely shot by Meesum.
What a way to get off the mark. That was some hit. Now this is Abdul Qadir we are talking about. It was pitched up all right. It was wide outside the off-stump, but it had so much pace behind that, as if he just put his bat on the ball and still got so much connection there. But a good way to end the over with. It's 10 for 1 after the first over. So 10 for 1. So not the ideal start from Malir Malangs, and they have to win to stay in the competition to reach the final, but they are certainly under pressure. 164 runs behind. They have to get 164 to surprise DHA Dabanggs. Well, the defending champions are playing like champions. Umri Pacer will be starting the second over. Chance, certain chance. Who wants it? It's a high catch. Umar wants it, and dropped by everyone. 4 men were converging, no communication whatsoever. That's a good fortune in the end for DK. I think it was Chota Wiki Waqaz who was trying to get underneath that, and it was his call as well. Umri Pacer, out of nowhere, said that he's going to take it, and in the end, the ball did not even touch any of their hands. But they can afford to smile a bit. Well, they can afford some drop catches. Oh, missed it outside the off-stump. Try to heave it, Neeson. And number of times high catches have been dropped due to communication error, and that was another example. 4 men were converging, and luckily they can afford some drop catches, but they should improve it. You see, it was Chota Wiki who was trying to get underneath that, and all of a sudden, Umri Pacer decided to take it. Off the inside edge, very close to hit the stumps. Chance of a run out. Slight fumble. Well, he's a lovely character, Umri Pacer, Muhammad Umar. He's the leading wicket taker, but if you look at the way he has bowled so far in this tournament, initially he was bowling the first few overs, and then as soon as the star bowlers came back in, he started bowling at the depth. Outside the off stump, he goes for it over offside. Nice and safe. 1 bounce into the boundary. Yeah, got the room, got the length he was waiting for, TK. Freeing his arms and hitting it comfortably over extra cover to earn himself his first boundary of the innings. It was offered, it was way outside the off stump. He chased it, and he gave plenty of bat on that. So boundary to TK. Well down the leg side, it's going to be given as wide. And they can afford to give few extra runs right now, DHA Dabanggs, because they have got so many runs to play with. Time to go down straight towards Henia Didar, who is out there on the sidelines. Thank you so much, Zishan. First semi-final match is being played, but meanwhile, I have a guest on sidelines who is Mr. Wasi Khan, energy expert को represent कर रहे हैं. Sir, thank you so much for joining us on the sidelines. Welcome to KTPL. Sure. क्या thoughts आप share करेंगे टेप बॉल क्रिकेट को लेकर? टेप बॉल क्रिकेट बचपन में हमने बहुत खेली है. हमें हमेशा से ये होता था कि अब इसके टूर्नामेंट्स क्यों नहीं होते, और आखिरकार ये एक हकीकत बन गया. और आप देखें कि कितने ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, और जो फॉर्मेट इन्होंने किया है वो बहुत ही यूनिक है, और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी ये पॉपुलर हो जाएगा. एम्बियंस बहुत अच्छा है अभी इस स्टेडियम में, और उसके बाद फिर शायद नेशनल स्टेडियम चला जाएगा. मैं समझता हूँ कराची को क्या पूरे पाकिस्तान को इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, और ये बहुत अच्छा किया है. मैं बहुत आई कंग्रेचुलेट, और बहुत ज़्यादा मैं इनको सराहता हूँ जो इनके ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो इसको लेके चल रहे हैं, कर रहे हैं, कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है और वाकई में बहुत अच्छी तरह किया है. मैं बहुत खुश हूँ. मेरी तरह के बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इससे. एंड सर आपने इतनी अच्छी बात की शेयर के मैं सोचता था कि टेप बॉल क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट्स क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज टैलेंट से भरपूर है पाकिस्तान. टेप बॉल क्रिकेटर, बल्कि कितने टेप बॉल क्रिकेटर्स अपना करियर नहीं बना सकते हैं, और जिनके पेरेंट्स उन्हें डांटते रहते हैं क्रिकेट खेल के क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो. तो इट्स वन ऑफ द अचीवमेंट्स फॉर KTPL कि वो इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जितना भी टैलेंट है उन्हें मौका मिल रहा है. जियो सुपर पर 84+ चैनल वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर लोग देख रहे हैं इन्हें खेलते हुए. देखें, हमारे मुल्क में बहुत से जो टैलेंटेड लोग हैं वो जो अच्छी स्पोर्ट्स हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते. तो ये तो स्ट्रीट बॉयज़ का गेम है,
इसको जो ऊपर लाना एक बहुत बड़ी एक सर्विस है, जो मेरे ख्याल में इस एंटरटेनमेंट के साथ और स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं जो जनरली हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, उसके साथ साथ स्ट्रीट बॉयज़ को ऊपर लेकर आना, उनके टैलेंट को निखारने के लिए ये एफ़र्ट बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। और बहुत जल्द अगर ये दुनिया में ये फॉर्मेट और ये टेप बॉल पॉपुलर हो गया तो यही लोग होंगे कि कितने टैलेंटेड और आगे जाएंगे। और असल टैलेंट है ही यही। हमारा टैलेंट तो शुरू कहाँ से होता है? टेप बॉल से शुरू होता है, घरों से शुरू होता है। हमने भी बड़े शीशे तोड़े, सब किया, खेला करते थे हम भी अपने अपने ड्राइवेज़ में। लेकिन जाहिर है कि जो लोग आगे क्रिकेट में जाते हैं फिर वो प्रॉपर फॉर्मेट में चले जाते हैं। आई मस्ट से कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उस चीज़ से। All right, thank you so much for joining You're us most on the welcome. sidelines. And now time Thank to you go very back much. to Combox. Thank you very much, Hina. They are really struggling. Nothing going in their way. Malir Malangs flicked away to the onside. Has he got the timing right? One bounce into the fence for 4. Yes, 4 given. Nicely timed. Leg side-ish and well put away. First error committed by Abdul Qadir. It was sliding down the leg side. DK just picking the ball and helping it on its way. Almost carried all the way for 6, but the ball just landing in front of the boundary ropes. Oh, that's gone through the legs. Goodness me. He has been so impressive, Abdul Qadir. Well, so many bowlers have tried to bowl those yorkers and slower ones as well, but since the batters are sitting deep inside the crease, so even the yorkers are being converted into overpitch deliveries. But as soon as Abdul Qadir delivers them yorkers, it's so hard for the batters to get underneath that, and so many times the ball has gone between the legs of the batters. Yes, his jokers generally have been pinpoint. Down the leg side, Mr. Radar, and on length was perfect, but just slightly down the leg side. Yeah, exactly. The length was perfect because even in the previous delivery, DK was all over the place. He opened his legs. This time he just let that ball go to the wicket keeper. Otherwise, that would have been a perfect delivery as well. They have been simply unplayable, the DHA bowlers. Very impressive, Abdul Qadir. Flicked away, wrist work comes into play. Gone this time, no mistake whatsoever. And Abdul Qadir struck in the last ball of his spell. DK has to walk back. Good catch in the outfield. He just cannot do anything wrong tonight, Abdul Qadir. It was pitched up, it was angling down the leg side. Wrist power comes into play, but just couldn't get enough distance behind the DK, and a very good catch taken by the fielder at square leg. So 2 wickets have gone down. It's 35 for 2. DK goes back for scoring 19. And time to go for us downstairs once again with Hina Didar. Thank you. Well, right now I have with me Mr. Sarosh Lodi, who is Vice Chancellor of NED University. Sir, thank you so much for joining us. Enjoy कर रहे हैं? Well, सर कह रहे थे कि वो genuinely हमारे व्यूअर हैं इस टेप बॉल क्रिकेट के, तो आप फॉलो कर रहे हैं टेप बॉल को? जी, मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसकी रूल्स भी बड़े डिफरेंट हैं, लेकिन है ये बिल्कुल जो हमने बचपन में अपने गली मोहल्लों में खेला है। आप तो पता नहीं इसकी एवोल्यूशन से वाकिफ़ है या नहीं है। टेप बॉल से पहले हम बॉल को गीला करके खेला करते थे। अच्छा जी। सड़क पे। उसके बाद ये आधी बॉल को टेप किया करते थे ताकि स्विंग हो। अब तो बाकायदा ये डेवलप हो गया बड़े शानदार गेम में, और आप लोगों ने तो खैर उसके 4 चांद लगा दिए। इतना बड़ा टूर्नामेंट कर रहे हैं और कई साल से कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग गेम है ये। Well, as you said कि आप फॉलो कर रहे हैं, तो कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं नाम भूल रहा हूँ जो पहले 4 मैच जीती थी विदाउट लूजिंग। मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरा ख्याल है लियारी की टीम थी। लियारी लेजेंड्स। जी, लियारी लेजेंड्स। मिस्टर ज़ुहैर नसीर की जी टीम है। जी। ओके जी, तो लियारी लेजेंड्स को आप फॉलो कर रहे हैं। जी। बाकी टेप बॉल क्रिकेटर्स का आप फॉलो करते हैं? खास किसी जी, प्लेयर को? मैं वैसे तो सारे प्लेयर्स के, लेकिन उसके एक बड़ा यूनिक कैरेक्टर आप लोगों ने डेवलप किया। हर प्लेयर का एक अपना समझिए एक निक नेम उसके नाम के साथ अटैच्ड है। कोई इरफान लेफ्टी है, तो कोई फलाना कुछ है, कोई जुनैद जानू है। यस, पैंडा है कोई। पैंडा है, तो वो बड़ी एक यूनिक चीज़ है, डिफरेंट है और इट्स वेरी यूनिक। चलिए जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन द साइडलाइंस एंड नाउ लेट्स गो बैक टू कॉम्बॉक्स। बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा। और हसन रज़ा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में या पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो एक ऐसा रिकॉर्ड है
जो लगता ही यही है कि मुस्तकबिल करीब में शायद टूट ही ना पाए। इस दौरान 4 रन हासिल किए ऑन साइड पर खेलकर, और गो के बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन कोशिश आखिर तक जारी है और कोशिश तो करनी ही चाहिए किसी भी खेल के लिए। वेलकम हसन। थैंक यू वेरी मच अनीस भाई, बड़ा अच्छा फॉर्मेट टेप बॉल क्रिकेट का, और जहां पर आज मैच हो रहा है DHA दबंग, बड़े काफ़ी रन्स किए और कंसिस्टेंट अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में KTPL में थ्रू आउट बड़े अच्छे प्लेयर्स सामने आए हैं DHA दबंग के। जी हाँ, उन्होंने लीड ही इतनी बड़ी ले ली थी 44 रन की कि फिर ये मुमकिन ही नहीं था कि इतना बड़ा टारगेट वो हासिल कर सकते थे, लेकिन बहरहाल कोशिश जारी है और ये कोशिश की जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा, और दुनिया के सबसे कम उम्र टेस्ट क्रिकेटर का एजाज़ उनको हासिल है, और टेस्ट क्रिकेट और टेप बॉल क्रिकेट ये दो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की क्रिकेट है। इस दौरान शॉर्ट गेंद थी, इसको पुल किया है डीप पोजीशन की जानिब, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। देखिए डिफरेंट क्रिकेट तो है ये, मगर एक प्लेटफॉर्म होता है स्ट्रीट क्रिकेट का, वहाँ से आप खेलते हैं। क्रिकेट का पैशन शौक ही वहीं से शुरू होता है, मगर ये जो प्लेटफॉर्म मिला है इनको बहुत ज़बरदस्त मिला है आज। यहाँ पर टर्फ पे मैचेस हो रहे हैं टेप बॉल के। अमूमन देखें तो शॉट जो खेला है मिड विकेट की तरफ, ये टेप बॉल वाला ही शॉट खेला है। एक और शॉर्ट बॉल थी, ओवर हाइट का इशारा देंगे, वाइट बॉल हुई। जी हाँ, 2 रन मिल जाते हैं इस पर। अनीस भाई, हमारे ज़माने में भी जब क्रिकेट खेलते थे तो स्ट्रीट क्रिकेट होती थी, और आज ये प्रमोशन कहाँ से कहाँ चली गई टेप बॉल की। पूरे पंजाब में क्रिकेट हो रही है टेप बॉल, और फॉलो कर रहे होते हैं। जी हाँ, तकरीबन हर क्रिकेटर ने जो बड़ी क्रिकेट खेला है उसने टेप बॉल से या टेनिस बॉल से या दूसरे अल्फाज में गंजी बॉल से जरूर क्रिकेट खेली है। फिंगर बॉल जिसे कहते थे, फिंगर बॉलर्स प्रोड्यूस होते थे उस ज़माने में, मगर देखते देखते वक्त बदलते ही क्रिकेट का पैशन, क्रिकेट का जोश और जज्बा एक और जोरदार छक्का इस दौरान हसन लगा है। 62 रन हो गए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर्स हो गए, सिर्फ 2 ओवर्स अब इस मैच के और इस इनिंग्स के बाकी। ये फेवरेट शॉट है टेप बॉल का, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, और हमेशा बहुत ही कम बैट्समैनों को देखने में मिलेगा कि एक्स्ट्रा कवर खेलेंगे, मिड विकेट की तरफ ज़्यादा शॉट खेलते हैं टेप बॉल में। जी हाँ, को वाइड किस्म की बॉल ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच, तो उसको शायद खेल पाए कवर पर या पॉइंट पर। देखिए टेस्ट क्रिकेट अगर हो रही है तो वहाँ आपको पता है टाइमिंग से खेलते हैं, मगर यहाँ पर आप अगर देखें तो हर बॉल को हिट करना पड़ता है। बड़ा फॉर्मेट तेज़ है इस क्रिकेट का। जी हाँ, बहुत तेज़ होता है, सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि कमेंटेटर्स को भी सारी चीज़ें बताने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन बहरहाल इसके साथ साथ चलना पड़ता है, और कोशिश करते हैं हम इस उम्र में भी इसके साथ चलने की। बिल्कुल रिफ्लेक्सेस तेज होने चाहिए आपके, बैटिंग में स्पेशली, और बॉलिंग में शोल्डर में जान होनी चाहिए, जैसे जरी कालिया जैसे बॉलर्स और दीगर जो माजिद कोहली ये बॉलर्स हैं खेलते हैं, तो अपने फॉर्मेट में ये कमांड हासिल करते हैं, और जहाँ भी सीमेंट पिचेस होती हैं वहाँ खेल रहे हैं। आज इनको KTPL सीज़न 3 का मौका मिला है खेलने का, और अपने आप को भरपूर मुजाहरा पेश कर रहे हैं, परफॉर्मेंस देने का सारे प्लेयर्स यहाँ। और हसन, दुनिया के हर शोबे की तरह आपने कहा कि क्रिकेट में या फास्ट बॉलिंग में शोल्डर्स में जान होनी चाहिए, तो ऊपर जो हेड है उसमें भी जान होनी चाहिए, क्योंकि पेस को अगर आप वेरी करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। जी हाँ, हेड और बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड जब कल आपका चलेगा तो ज़ाहिर बात है आप यूटिलाइज करेंगे अपने माइंड को, वेरिएशन से बॉल करेंगे, क्योंकि टर्फ पिच है ये, और टेप बॉल फॉर्मेट अगर आप देखें तो सीमेंट पे ज़्यादातर खेली जाती है। ये फॉर्मेट इनको मिल रहा है 3rd टाइम बदर एक्सपो अमीन UPL अमीन सीज़न 3 KTPL। इस दौरान एक मतलब फिर खेला गया है एक शॉट मिड विकेट की जानिब, लेकिन इसमें ज़्यादा पावर नहीं आ सकी, सिर्फ एक ही रन ऑन साइड पर बनेगा, तो 63 रन हो गया स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 112 रन की और ज़रूरत है, और 11 मुमकिन गेंदें बाकी। बड़ा मुश्किल टारगेट है ये, बहुत ज़्यादा मुश्किल टारगेट है। अनलेस बहुत ही बुरी बॉलिंग हो तो क्लोज जा सकता है मैच, मगर यही है रन्स और बॉल्स का डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है। एक और अच्छी गेंद इस मरतबा ऑन पर खेलना चाहते थे, लगी तो पैड से है। अगर ये कोई और क्रिकेट हो रही होती तो शायद LBW की अपील होती। LBW हो जाता है, यही फॉर्मेट है इस क्रिकेट का। और ये फॉर्मेट जो है अगर आप देखें तो सेकंड इनिंग भी है इसमें। अमूमन 6 ओवर्स के मैचेस होते हैं पूरी दुनिया में टेप बॉल के, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है लीग बेसिस पे टूर्नामेंट। और इस मरतबा ऊंचा शॉट खेले हैं, लॉन्ग ऑन पोजीशन की जानिब, गेंद हवा में है, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर तो थी, लेकिन एक टिप्पा खाकर उन्होंने इस गेंद को कलेक्ट कर लिया है। अंपायर यकीनन इसको देखेंगे रिप्ले में। जी हाँ, भी डिसाइड कर रहे हैं अंपायर कि ये 4 है या 6 रन हैं। काफ़ी देर हवा में रही बॉल, मिड विकेट पे शॉट खेला, जैसे हमने बताया कि टाइमिंग कोई नहीं होती इस क्रिकेट में, बैट का फ्लो जाता है मिड विकेट की तरफ। यकीनन ये 4 रन होंगे। 1 बॉम्ब्स मेरे ख्याल में गया, और ट्राई भी की थी लेफ्ट हैंड पे फील्डर से, मगर काफ़ी दूर थे बॉल से। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये ज़मीन पर पहले गिरी है, और फिर कर्टिंग्स जो हैं एडवर्टाइजिंग ट्रायंगल है उससे टकरा कर फिर प्ले एरिया में ही रही है, लेकिन चुके लग गई है बाउंड्री से। तो मुझे तो यही लगता है कि अंपायर इसे 4 रन करार देंगे, लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं आया है। रिप्ले एक मरतबा फिर देखिए, अभी तक थर्ड अंपायर से कांटेक्ट में हैं फील्ड अंपायर।
ये देखिए बाएं जानिब थी फील्डर के, वो इसे कैच तो नहीं कर सके, लेकिन ये गिरी है थोड़ा सा हवा में भी रहा है बॉल। जी हाँ, प्लेइंग एरिया में एयर में घूमा है बॉल ये, ताकि बड़ा मुश्किल होता है जज करना ऐसे कैचेस बाउंड्री लाइन पे, और ये बिल्कुल ही बॉडी से दूर रहे। फील्डर भी समझ रहे थे कि बॉल शायद बाहर चले गई है बाउंड्री से। बिल्कुल आखिरी लम्हात में उन्होंने गेंद को रोका है। थोड़ा सा टफ डिसीजन हो रहा है थर्ड एम्पायर के लिए, अभी तक रेफर नहीं कर पाए। जी हाँ, डिसीजन दे दिया है। जी डिसीजन दे दिया, एक ही रन बना है, 63 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ऑन साइड पर खेले 1 रन बना, और अब चलते हैं ग्राउंड में हिना की जानिब। Thank you so much. Well, I have two guests right now with me on the sidelines. On my right standing is Brigadier retired Mr. Arfan Akhtar, who is CEO of ASF Foundation Pakistan, and on my left is Mr. Khizar Parvez, CEO of Investment Department Government of Sindh. Thank you so much, both of you, for joining us on the sidelines. Well, sir, it's a semi-final being played between Malir Malangs and DHA Dabanggs. आप किसे support कर रहे हैं? माशाल्लाह जी, मैं तो मलीर को सपोर्ट कर रहा हूँ, and it's a wonderful evening, and I must say कि providing such a big environment or opportunity to the people of Karachi and especially to the people of Pakistan and the region, ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि इस मौसम सरमा में कराची जैसे माहौल में मौसम में ये एक्टिविटी प्लान की गई है, और मैं इसका क्रेडिट बदर एक्सपो को भी देता हूँ, और पूरी जो कराची की जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है और एंटरप्रेन्योरशिप है, मैं उनको देता हूँ जिन्होंने हमारे नौजवानों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म रखा है, जिससे हम आगे निकल के और एक अच्छे खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं, और अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वो मौका दे सकते हैं जिससे कि अच्छे प्लेयर्स की एक जो क्वालिटी का नेचर है और सप्लाई चेन है वो मेंटेन रहेगी। Yes, definitely. Well, if I'm not wrong, you are joining us for the first time on the sidelines. So, welcome to KTPL, and how do you find the atmosphere here? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इवेंट एज ब्रिगेडियर साहब जस्ट मेंशन। इस तरह के इवेंट्स कराची में होने चाहिए, और मैं कमेंट करूंगा और क्रेडिट दूंगा बदर एक्सपो को एंड ऑल द बिजनेस कम्युनिटी हैज सेड, एंड स्पेशली जियो सुपर को, जो इस तरह के इवेंट्स को जो है वो कवर करता रहता है, और आने वाली जो हमारी जो टीम्स हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, उसको प्रमोट करता है। तो आई थिंक लॉट ऑफ कूडो गोज टू जियो सुपर फॉर डूइंग दिस। और इस तरह के इवेंट्स है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि होने चाहिए, और हमारे जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, उसको इसकी बहुत ज़रूरत है, नॉट जस्ट क्रिकेट and every other sports like football and tennis and squash and all that. So I think a lot of these kind of events should happen, and Geo Shopper should take the lead on this. Thank you. Well, thank you both of you for sharing your thoughts on the sidelines. And now let's go back to Combox. बहुत शुक्रिया हिना। और इस दौरान एक कैच ड्रॉप हुआ है, और इस मरतबा भी ऊंचा खेले हैं, इस मरतबा भी आउट हो सकते हैं अगर फील्डर कैच करे तो, और इस मरतबा कोई गलती नहीं की। अच्छा कैच लिया ये, और ये फॉर्मेट देखें, जैसे हम कह रहे हैं कि टेप बॉल क्रिकेट हो रही है, 3 स्लिपें लगी हुई थी यहाँ पर, क्योंकि स्कोर 105 रन रह गए प्रेशर डालते हुए बैटर्स पे। कोई टाइमिंग नहीं थी, हवा में बैट का था, कोई नजर नहीं थी बॉल पे, और टॉप एज लगा, कैच आउट हुई, इजी कैच। जी बिल्कुल, अफोर्ड कर सकते हैं 3 स्लिप, मेरा ख्याल है 9 स्लिप भी अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे हमने पुराने टेस्ट मैचों में देखी है ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में ही होती हैं, जब बॉलर जो है अपनी तेज़ रफ्तारी से बॉल कर रहा होता है, वहाँ पर यकीनन टेस्ट मैच में 8 स्लिपें हैं, 9 स्लिपें रही हैं। हमारे लेजेंडरी बॉलर्स ने काफ़ी आउट किए अपने जदीद दौर में, 80s में 70s में प्रोड्यूस हुए फास्ट बॉलर पाकिस्तान की तरफ से। जी हाँ, 69 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हैं, अब भी 105 रन की ज़रूरत है, और सिर्फ 4 गेंदें बाकी रह गई हैं। यकीनन इस वक्त कहा जाता है, वैसे तो कहा जाता है क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन है। ये बहुत ही मुश्किल टारगेट हो गया है, 105 रन हैं, और हमेशा से मैच जब भी हो तो ज़रा इक्वल रहता है, मैच में इंटरेस्टिंग होता है, मैच में मज़े आते हैं, और जी फॉर्मेट ही ऐसा है कि चौके छक्के लगें तो लोग इसको एंजॉय भी करते हैं क्रिकेट को आजकल। मगर आपने ये नहीं पूछा अनीस भाई कि इसके बाद किसका मैच है? जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त मैच है, आप ना भी पूछूं तो इसको बताना ज़रूरी है। हाँ, लोगों को बताना ज़रूरी होगा। क्लिफ्टन पॉपुलर की टीम है, जिसका बैटिंग मेंटोर भी हूँ मैं, और बड़ा टफ मैच है हमारा, इस सेमीफाइनल की स्टेज में हम पहुँचे हैं, तो मेरे ख्याल में लियारी की टीम भी बहुत अच्छी है, और उनसे मैच है अगला मैच हमारा। बहुत ही ज़बरदस्त मैच, दूसरा सेमीफाइनल होगा। ये तो खासा वन साइडेड नज़र आता है, वाइट बॉल है, 2 रन का इजाफा होगा, 71 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, क्योंकि अभी भी 103 रन दरकार हैं कामयाबी हासिल करने के लिए, और 4 गेंदें सिर्फ बाकी हैं। KTPL सीजन 3
यूबीएल अमीन जो कि मोइन खान क्रिकेट अकेडमी में खेले स्टेडियम में खेले जा रहा है और बहुत ही अच्छा क्राउड आया हुआ है क्योंकि वीकेंड भी है और ये थ्रू आउट टेप बॉल की प्रमोशन और प्लेयर्स जितने भी यहाँ पर ज़ुहैर नसीर को बहुत क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया सीज़न 3 का KTPL का। पूरे पाकिस्तान से जो सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं वो इसमें खेल रहे हैं। ड्राफ्ट होता है इसका, प्लेयर्स खरीदे जाते हैं और उसके बाद ये सूरत हाल आती है। इस दौरान एक लेग ब्रेक डिलीवरी ज़ोरदार तरीके से खेलना चाहते थे। आइए एक मरतबा फिर चलते हैं ग्राउंड की जानिब जहाँ मौजूद है हिना। Thank you so much. Well, I have with me one of the prominent faces in Pakistan journalism, Mr. Fahim Siddiqui, who is senior journalist and president of KUJ. Sir, thank you so much. आपने हमें ज्वाइन किया. Well, usually journalist खबरों के पीछे भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन I'm sure क्रिकेट के शौक में मैदान में भी दौड़ लगती होगी आपकी भी. बिल्कुल ऐसा ही है और यहाँ पर जो मैं आया हूँ तो क्रिकेट के शौक में ही आया हूँ और ये जो कराची में आपने मेला सजाया हुआ है, ज़बरदस्त मेला है भाई, क्या रंगारंग मेला है और मैं इसको मिस कर रहा था। जब से ये शुरू हुआ है तो मैं सोच रहा था कि यार मैं अभी तक वहाँ जा क्यों नहीं सका हूँ। मुझे दोस्तों ने भी कहा कि चलना है, मैंने कहा हाँ चलना तो है, लेकिन टाइम नहीं निकाल पा रहा था। तो आज मैंने कहा कि आना ही आना है चाहे कुछ भी हो। पर सेमीफाइनल देखने को मिल रहा है, इससे अच्छी क्या बात है। बहुत मज़े का इवेंट है और जो सबसे अच्छी बात है ना इस इवेंट की वो ये है कि ये कराची की शनाख्त बन गया। और अब ये जो है कराची से पहचाना जाने लगा है। हम जो कराची को कहते हैं ना खबरों में रहते हुए कि कराची स्ट्रीट क्राइम हो गया, कराची में कोई और मसले, कराची में रोड्स ख़राब हैं, कराची में फ़लाँ मसला है। कराची में ये रंग भी तो है, कराची का ये कलर भी तो है जो सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। हम यहाँ मौजूद हैं, इसे इंजॉय कर रहे हैं और जो इसका सक्सेस है ना वो बेसिकली बड़ा मज़े का है। अभी मुझे बता रहे थे जो है कि 82 ममालिक में ये देखा जा रहा है। ग्रेट 84 प्लस। यस, और उसके साथ अगर हम ये कहें कि क्रिकेट, हम तो क्रिकेट नेशन को वो है ना, क्रिकेट लवर है हम तो। ओके सर, हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे जरूर। यह मैच खत्म हो गया है, विल गो बैक टू कॉम बॉक्स। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 102 रन कामयाबी हासिल कर ली है DHA दबंग ने। मलीर मलंग को शिकस्त हो गई है इस पहले सेमीफाइनल में और अब कुछ वक्फे के बाद एक दी मैच जिसे कहना चाहिए आज के हवाले से ख़ास तौर पर दी मैच यकीनन होगा, लेकिन 72 रन पर सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन 6 ओवर्स मुकम्मल हुए सेकंड इनिंग्स के और 101 रन से DHA दबंग ने ये पहला सेमीफाइनल सीज़न 3 का जीत लिया है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ये अभी मैच ख़त्म हुआ है और जो तमाशाई हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं, झंडे लिए हुए हैं DHA दबंग में। हाइलाइट्स देखिए, पहला ज़ोरदार शॉट जो मिड विकेट की जानिब खेला गया, उसके बाद एक बड़ी अच्छी यॉर्कर गेंद जिस पर क्लीन बोल्ड हुए और बड़ा स्लिंगिंग एक्शन है और इस दौरान ये ऊंचा शॉट खेला और गेंद बहुत देर तक हवा में रही और ये कैच नहीं हो सका 3 फील्डर्स के पहुंचने के बावजूद भी। इस मरतबा काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है DHA दबंग के बॉलर्स ने। बैकफुट पे शॉट्स खेले, एक और शॉट था ये स्ट्रेट खेला है। कुछ ऐसे शॉट्स थे जो क्रिकेटिंग शॉट खेले प्रॉपर, मगर ये एक लेग स्टंप पे इनको फेवरेट बॉल मिली है, ऑन पे खेला। जी हाँ, दोनों इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की है। ये हेलीकॉप्टर शॉट ये मगर कैच हुए। ये भी पावरफुल शॉट था मिड विकेट की तरफ, काफ़ी देर हवा में रही बॉल। ये फेवरेट शॉट है, जितने भी शॉट्स आप देख रहे हैं लेग स्टंप पे खेले हैं मलीर मलंग्स के बैटर्स ने। जी हाँ, वो सेमी सर्कल सा है, लॉन्ग ऑन से लेकर डीप स्क्वायर लेग तक। इस दौरान इसी जगह पर शॉट्स ज़्यादातर खेले जाते हैं टेप बॉल में और ऊंचे भी खेले जाते हैं। एक और ड्रॉप कैच, इस मरतबा ये बैक फुट पर जाकर खेले। कवर पे मारना इतना आसान नहीं नज़र आया है। यहाँ भी शॉट खेले, ये भी देखिए इस इनिंग्स का ये आखिरी खिलाड़ी जो आउट हुआ था कवर में कैच हुए और इस तरह से DHA दबंग ने 101 रन से कामयाबी हासिल की। हैंडशेक मैच के अख्ताम पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के दरमियान एक ऐसी रिवायत जिसे बरकरार रखा गया है। जी बैटिंग कार्ड है, मलीर मलंग्स ने 72 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बनाए, जिसमें 22 रन अवैस के थे और 19 रन DK ने स्कोर किए। 6 ओवर्स उनके मुकम्मल हुए सेकेंड इनिंग्स के और उसके साथ बॉलिंग कार्ड जिसमें दो विकेटें हासिल की अब्दुल कादिर और यासिर ने। 3 रन देकर यासिर ने 2 खिलाड़ी आउट किए और 16 रन दिए अपने 2 ओवर्स में और 2 विकेटें हासिल की अब्दुल कादिर ने। मैच समरी, पहले बैटिंग की DHA दबंग ने 118 रन बनाए 6 ओवर में बगैर किसी नुकसान के। मलीर मलंग ने जवाब में 74 रन बनाए, 44 रन की लीड ली DHA दबंग ने और दूसरी इनिंग्स में 129 रन बनाए और फिर 72 रन तक महदूद किया मलीर मलंग को और DHA दबंग ने ये मैच
सेमीफाइनल 101 रन से जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी इसके बाद होगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 2023 पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर KTPL की इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आपको खुश आमदीद कहेंगे DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी से। बिग मैच, बिग नाइट, और आज था KTPL सीजन 3 2023 का पहला सेमीफाइनल और मुकाबला था DHA दबंग बनाम मलीर मलंग, और दोनों इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेकिन आज एक टीम ने जीतना था, एक टीम का सफर खत्म होना था, तो आज जो टीम हारी है उनको हम कहेंगे हार्ड लक, और जो टीम जीती है जो कि DHA दबंग है उनके लिए होनी चाहिए भरपूर तालियां। तो अब एक बात तो तय हो चुकी कि KTPL सीजन 3 2023 की ट्रॉफी या तो DHA दबंग जीतेगी या फिर फाइनल में वो रनर्स अप होंगे, लेकिन वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं जो कि कल खेला जाएगा DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में। आज की इस प्रेजेंटेशन पार्टी में हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर के डायरेक्टर मोइन खान साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। SEDF CEO खैजर परवेज साहब को खुशामदीद कहेंगे। उसके अलावा ब्रिगेडियर अरफान रिटायर्ड, आप CEO हैं ASF फाउंडेशन के। वसी खान चेयरमैन बाइको पेट्रोलियम, आपको खुशामदीद करेंगे। कर्नल रिटायर्ड जका सेक्रेटरी DHA स्पोर्ट्स क्लब, आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के मारूफ साहबी और कराची यूनियन जर्नलिस्ट के सदर फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। दोनों टीमों के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश खान साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे DHA दबंग, और ज़फ़र अब्बास साहब मलीर मलंग, यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, उनको मेरे ख्याल रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके दोस्त। उसके अलावा हमारे साथ इस प्रेजेंटेशन पार्टी में मौजूद हैं बूस्ट अप योर लाइफ स्टाइल आमिर अरबी और अरमान अरबी साहब। उसके अलावा इमरान हैदर साहब और राहिल किदवाई साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं UBL अमीन को। तो ये आज की हमारी प्रेजेंटेशन पार्टी है, और आज मैच जिस तरह मैंने आपको बताया खेला गया DHA दबंग और मलीर मलंग की टीमों के दरमियान, और बिल्कुल वन साइडेड इनकाउंटर रहा, जहां पहले खेलते हुए 118 रन स्कोर किए DHA दबंग ने। सेकंड इनिंग में 5 विकेट पर 129 रन स्कोर किए। पहली इनिंग में मलीर मलंग की टीम कुछ ऑफ कलर नजर आई, 4 विकेट पर 74, और लीड रही 44 रन की DHA दबंग की। और प्रेजेंटेशन पार्टी में मैं ये जरूर पूछूंगा कि DHA दबंग आज क्या खा कर आए थे। उसके अलावा उन्होंने सेकंड इनिंग में 72 रन किए मलीर मलंग ने, और ये मैच वो 101 रन से हार गए। सबसे पहले बारी है आज के प्लेयर ऑफ द मैच की। आज कुछ नोटेबल परफॉर्मेंस हमारे सामने रही। अरसलान अच्छी ने 31 रन स्कोर किए 11 गेंदों पर DHA के लिए। खुर्रम ने 27 नॉट आउट किए 10 गेंदों पर। फिर मिमरान ने 30 रन स्कोर किए 13 गेंदों पर। कादिर अब्बासी ने DHA दबंग के लिए इस मैच में फर्स्ट इनिंग में 2 for 20 किया, जो कि कादिर अब्बासी कश्मीरी के नाम से मशहूर हैं। सेकंड इनिंग में उन्होंने 2 विकेटें हासिल की 16 रन देकर। अवैस पठान ने इस मैच में 32 रन स्कोर किए 10 गेंदों पर मलीर मलंग के लिए। लेकिन KTPL की ज्यूरी ने जिस खिलाड़ी को आज के प्लेयर ऑफ द मैच के लिए आज मुंतखब किया है, उसकी परफॉर्मेंस शानदार है। DHA दबंग के लिए दबंग परफॉर्मेंस है। फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 85 रन स्कोर किए 26 गेंदों पर, 5 चौके 8 छक्के। सेकंड इनिंग में उन्होंने नॉट आउट 27 रन स्कोर किए 10 गेंदों पर, 2 चौके 2 छक्के। आज के प्लेयर ऑफ द मैच खुर्रम शहजाद चकवाल। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन मोइन खान साहब से कि वो इनको शील्ड पेश करें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ब्रिगेडियर अरफान रिटायर्ड ASF फाउंडेशन, आपको 5000 का चेक देंगे खुर्रम। ओसाका का आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है खुर्रम, रुकेंगे आप अभी। और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा चेयरमैन बाइको पेट्रोलियम वसी खान साहब से कि ये आपको गिफ्ट हैम्पर पेश करेंगे। वसी खान साहब। बड़ा शानदार खेले हैं आज खुर्रम।
उन्होंने 36 गेंदों पर 112 रन किए इस मैच में, 7 चौके 10 छक्के। और खुर्रम अभी आप जाएंगे नहीं क्योंकि आमिर अरबी और अरमान अरबी बूस्ट अप योर लाइफ स्टाइल का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। आज DHA दबंग के दानिश खान बड़े लकी हैं जिनकी टीम आज जीती है, और उसके अलावा दानिश की वालदा भी आज यहाँ पर मौजूद थी, तो अम्मा की अगर दुआएं हो तो फिर DHA दबंग जैसी परफॉर्मेंस सामने आती है। खुर्रम यही रहेंगे आप अभी हमारे साथ, और आपके लिए दानिश ने मुझे बताया कि हुसैन निसार इस्तांबुल और अलबुर्राक ने 5000 का ऐलान किया है, वो भी आपको मिल जाएगा। आइए ज़रा खुर्रम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे। खुर्रम सबसे पहले तो ये बताएं क्या खा कर आए थे आज? कुछ भी नहीं खाया। कुछ नहीं खाया आपने? तो मेरा ख्याल है फिर तो आपको फाइनल तक भूखा रहना चाहिए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कल का दिन है, कोई नहीं, भूख बर्दाश्त कर लेंगे इंशाल्लाह। तो खुर्रम बैटिंग तो आपने ऐसी दबंग किया, थोड़ा सा आगे आ जाइए। बैटिंग तो आपने दबंग की, आवाज़ आपकी निकल नहीं रही। बस गला ख़राब है थोड़ा। तो खुर्रम ये बताएं, ओवरऑल बड़ा मैच था और इस बड़े मैच में आपकी टीम ने बड़ी परफॉर्मेंस दी है, बिल्कुल दीवार से आज आपने मलीर मलंग को लगा दिया। उम्मीद थी इस परफॉर्मेंस की, आपको लग रहा था कि मलीर मलंग इस टूर्नामेंट में अच्छा खेलें? जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह हमारा टीम का जो कम्बिनेशन है बहुत अच्छा चल रहा है। दानिश भाई भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हर प्लेयर को, तो हमने यही पहले प्लान किया था कि इंशाल्लाह अगर टॉस जीतते हैं तो इंशाल्लाह 100+ अगर स्कोर करते हैं हम, तो हमारी बॉलिंग माशाल्लाह बॉलिंग के आने से हमारी टीम में बहुत ज़्यादा जान आ गई है। तो हमारी बॉलिंग ऐसी है कि इंशाल्लाह हम तकरीबन 30 रन की 40 रन की लीड लेंगे। अगर लीड ले गए हम तो इंशाल्लाह मैच में भी कामयाब होंगे, और वही हुआ। तो खुर्रम आप भी इस टूर्नामेंट में चंद अच्छी इनिंग की उम्मीद कर रहे थे, तो मुतमईन है कि ये परफॉर्मेंस आपकी सेमीफाइनल में टीम के काम आई है? जी जी बिल्कुल, हमेशा से कोशिश की है अच्छा खेलने की और टीम को जितवाने की। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है, जब मुकद्दर में हो जाए तो उसी टाइम मिलती है। थैंक यू वेरी मच। और कैच ऑफ द मैच भी खुर्रम का ही था, जो कि ओसाका का वो आप ले चुके हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बाइक स्टार्ट कर लीजिए। डॉक्टर कदीर डॉन KTPL, आज तो कोट पहन कर आए सर आप, और बैट लेकर आए डॉक्टर साहब। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दानिश खान और मलीर मलंग के रिप्रेजेंटेटिव से कि वो आएँ और ये बैट पेश करेंगे, और इसके लिए मोहम्मद हमजा सिद्दीकी और अयान फरहान यहाँ पर अगर मौजूद हों तो। फ़हीम सिद्दीकी साहब आप आ जाइए। जी डॉक्टर साहब जरा आज बाइक यहाँ से घुमा के ले जाइएगा। आज तो आपने टाई भी बड़ी खूबसूरत लगाई हुई है, जरा तालियां हो जाएं डॉक्टर साहब के लिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लूजिंग टीम मलीर मलंग की कैप्टन दाऊद खान से, DK आइए और थोड़ी सी बात कीजिएगा। दाऊद कोई बात नहीं, गिरते हैं शायद सवारी, मैदान जंग में आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और अच्छा मुकाबला किया है। एक टीम ने हारना था, कोई बात नहीं, कुराफाइल आपके नाम नहीं निकला नेक्स्ट टाइम। तो मैच से पहले आज थोड़ी सी बदमज़गी हुई, उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि आपके लड़के कुछ कम हो गए थे, क्या उसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ कॉम्बिनेशन? नहीं नहीं, उस वजह से तो कुछ नहीं हुआ, पर हम लोगों ने जो शुरू में कैचेस वगैरह ड्रॉप किए उससे थोड़ा मुलार डाउन हुआ। लेकिन क्रिकेट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो गलतियां हम लोगों ने की हैं तो इससे इंशाल्लाह सीज़न 4 में सीख कर आएंगे। तो क्या आज वजह थी आप लोग टूर्नामेंट में इतना अच्छा खेले? वो जो मैं आपसे बात कर रहा था आखिरी मैचों में, नॉकआउट मैच से पहले वो जो आप 2 मैच हारे, उसकी वजह से कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हुआ आपका? क्योंकि आप लोग तो नाकाबिले शिकस्त थे टूर्नामेंट में। नहीं, कोशिश थी कि अच्छा टूर्नामेंट खेलें, पर जो नसीब में होता है वही होता है। पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करें। तो खुर्रम कहना चाहेंगे कुछ KTPL की इंतज़ामिया के लिए इतना अच्छा मेला सजाया, और इस टूर्नामेंट में आपने बाकी टीमों ने जो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची, क्योंकि ये आज आपका आखिरी मैच है, क्योंकि आप लोग अब फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए हैं, कुछ पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो टेलीविज़न पर आपको देख रहे हैं, जियो सुपर पर, टेप बॉल में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, टेप बॉल खेल रहे हैं? बस यही कहना चाहूँगा, जो KTPL टूर्नामेंट करवाती है ये वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है टेप बॉल हिस्ट्री का। तो इंशाल्लाह हमारी भी इनके साथ बेस्ट विशेस हैं, जितना ताउन हमारी तरफ से होगा वो भी हम करेंगे, और इंशाल्लाह बेस्ट विशेस हैं इनके साथ। बहुत शुक्रिया और भरपूर तालियां होनी चाहिए DK दाऊद खान, मलीर मलंग के कप्तान। और अब आपकी भरपूर तालियों में DHA दबंग फाइनलिस्ट टीम यासिर मुश्ताक के लिए भरपूर तालियां। जी यासिर साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आपकी आवाज़ भी निकल रही है, गरज रही है, बरस पे आप पड़े हैं आज मलीर मलंग के ऊपर। ओवरऑल अपनी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? आपने तो डरा दिया है फाइनल में आने वाली टीम को।
नहीं माशाल्लाह से जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। लड़कों ने जिस तरह से ग्राउंड में परफॉर्म करके मैच जीता है और फाइनल के लिए भी मैं यही बोलूँगा, लड़कों को इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि जितना अच्छे से अच्छा क्रिकेट को खेलेंगे, विन करेंगे तो ही मज़ा आएगा। अभी इख्तिताम हुआ नहीं है इस टूर्नामेंट का, फाइनल इंशाल्लाह विन करेंगे तो पूरे 15-16 दिन की जो मेहनत है वो हासिल होगी। दबाव है यासिर थोड़ा सा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कारकर्दगी का मुजाहरा कर दिया है, बड़े मैच में जा रहे हैं और जो आपकी 101 रन की आज की कामयाबी है वो आपको फेवरेट कह रही है? दबाव तो ऐसा नहीं सच, मगर सारे लड़के प्रोफेशनल हैं, पहली दफ़ा फाइनल नहीं खेल रहे, पिछली दफ़ा के भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डिफेंडिंग चैंपियन है, तो इन सारे लड़कों को, प्रोफेशनल प्लेयरों को पता है फाइनल खेलना किस तरीके से। बाकी ऑन द डे जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी जीतता वही है। बहुत शुक्रिया यासिर। मुश्ताक DHA दबंग के कप्तान हमारे साथ मौजूद थे और UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 2023 पहले सेमीफाइनल की इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी से आपसे इजाजत चाहेंगे। DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे दूसरे सेमीफाइनल के टॉस के साथ।